Okay. So, dear friend, in the last video, I already discussed about the satellite photograph of Amazon rainforest. The planet, that is the name on the Kaggle, you can see, understanding the Amazon from space competition was Competition was held on Kaggle in 2017. The competition involved classifying small squares of satellite images taken from space of the Amazon rainforest in Brazil in terms of 17 classes, such as agriculture, clear, and water. The point is, the images are multi-level, right? So multi-level means each image can be labeled as river and satellite. So how that we have to make a target of it. So I already told you how to take the data. Data is already there. Can create you these are the options like haze primary, agriculture clear primary, water clear primary, agriculture clear, habitation primary, road. These are the names. Just a second. So I already show you the images like this. Create a mapping. So train v2.csv, these contains the names, read underscore csv file name, that is the csv, csv.shape, so this is 40,402 columns, all the rest. So train 0, that is the image name, and tags. So this has like agriculture, clear, primary, water. It has 3 tags, right? So we have to create a data set and target column. Target column is multi-level, right? So we need to set the all known tags assigned to images. For that, we created a blank set, labels is equal to blank set, that is the blank. For loop, I in range length of mapping underscore csv. Every value go is I, mapping underscore csv tags in the I index dot split by space tags. Label dot update tags, the tags is been updated. Just take an example. These are the tags. The space से तोड़कर हम उसको उसमें डालें. List of labels. So there is total this much of 17 distinct labels has been, unique labels has been created, because this is a function set. Set gives you unique values, right? Now we make a dictionary and giving each label a name. So what I did, I run for in range length of labels. Every value comes in I. And I created labels, length of labels, the data. I put that index colon I. So डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी में दोस्तों यहाँ पे अगर वैल्यू दे दो, की दे दो, तो वो वैल्यू देता है. तो वैल्यू कोलन आई, तो ये वैल्यू कोलन आई, आई क्या है, यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग डिक्शनरी का की बना रहे हैं, और ये वैल्यू, तो की वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा. इसी तरह इनवर्स भी कर रहे हैं, तो आई कोलन लेवल आई. तो एक देखिए बना एग्रीकल्चर 0, आर्टिजनल माइन 1, बेयर ग्राउंड 2 एंड सो ऑन. दूसरा क्या है, 0 एग्रीकल्चर 1 आर्टिजनल माइन, ऐसे. तो हम लोगों ने ये बना के रख लिया. We can tie all of this together into a convenience function called create tag mapping that will take the loaded data frame containing the train version 2.csv data and return a mapping and inverse mapping dictionaries. तो ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना ली जो रिवर्स और इनवर्स मैपिंग जो ऊपर किया उसी का टोटल एक फंक्शन हो गया. ठीक है. वी कैन टेस्ट आउट दिस फंक्शन टू सी हाउ मेनी एंड व्हाट टैग्स वी हैव टू वर्क विद. द कंप्लीट एग्जांपल इज लिस्टेड. क्रिएट ए मैपिंग ऑफ टैग्स टू इंटीजर. तो सब हम लोगों ने मैपिंग ऑफ टैग्स का इंटीजर कंप्लीट फंक्शन, और उस फंक्शन को रन करके मैपिंग, इनवर्स मैपिंग, दो फंक्शन बना. प्रियंवदा, आर यू ओके? हाँ. आप बोर तो नहीं हो रही हैं? नहीं. We also need a mapping of training set. File names to the tags for the image. This is a simple dictionary with the file name of the image as the key and the list of tags as the value.
This create file mapping below implement this also taking the load data frame as an argument. देखिए हम लोग मैपिंग कर रहे हैं. Create a mapping of file name to tags, यानी एक फाइल नेम है train 0 और उसकी मैपिंग. तो देखिए क्रिएट फाइल है मैपिंग अंडरस्कोर CSV, जहां पे इमेज का नाम है train 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पे टैग है CSV. यानी इमेज हम नहीं उठा रहे दोस्तों, इमेज का नाम और इमेज का उसका टारगेट कॉलम क्या है. मैपिंग इज इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी बनाया, फॉर लूप चला, लेंथ ऑफ मैपिंग अंडरस्कोर से जितनी लेंथ है. मैपिंग अंडरस्कोर CSV में मैंने इमेज नेम डाला. ठीक है, मैपिंग अंडरस्कोर CSV जो है ये डिक्शनरी है, तो यहां इमेज नेम आई, यानी इमेज नेम नाम की से हम लोग आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो पिक कर रहे हैं. मैपिंग CSV टैग्स में से आई, तो एक इमेज और एक टैग, इमेज का नाम और टैग, इसको हम लोग नेम और टैग दिया. और हम लोग यहाँ मैपिंग नाम के एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाए, इसमें इसको की और इस टैग को टैग डॉट स्प्लिट स्पेस से तोड़कर इसको हम लोगों ने टैग में डाल दिया. तो एक इमेज का नाम और टैग डिक्शनरी के फॉर्म में हमारा मैपिंग में सेव हो गया. We can now prepare the image component of the data set. We can now prepare the image component of the data set, create in memory data set. We need to be able to load the JPG images into memory. हमें JPG इमेज को मेमोरी में डालना है. This can be achieved by enumerating all files in train JPG folder. Keras provides a simple API to load an image from file via the load image function and to convert into a NumPy array via the image to array function. तो सेम काम है. As part of loading an image, we can force the size to be smaller to save memory and speed up training. In this case, we will halve the size of the image from 256 to 256 to 128 to 128. We will also store the pixel values as an unsigned 8-bit integer. Pixel value को unsigned, ये डेटा टाइप है, देखिए unsigned, देखिए प्रियवदा unsigned 8-bit integer. यूनिट इसको 8 बोलते हैं. वैल्यू 0 and 255. फॉर एग्जाम्पल 0 से 255 के बीच ये वैल्यूज को लेता है. वी विल आल्सो देखिए स्टोर द पिक्सल वैल्यूज एज एन अनसाइंड 8-bit इंटीजर. हम पिक्सल वैल्यूज को अनसाइंड 8-bit इंटीजर के रूप में लेंगे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इट वैल्यूज बिटवीन 0 and 255. ये 0 से 255 के बीच वैल्यूज लेता है. लोड अंडरस्कोर इमेज, फाइल नेम, टारगेट अंडरस्कोर साइज 128 128, इसको हम लोगों ने नाम दिया फोटो. इमेज टू एरे में फोटो डाला, डेटा टाइप uint8. uint8 क्या है? अनसाइंड 8-bit इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर ऑफ 8-bit. ठीक है, तो देखिए इमेज टू एरे uint8 कर दिया, तो ये क्या करता है? 0 से 255 के बीच पिक्सल की वैल्यूज रखता है. ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरीके से अपनी इमेज को लेंगे. The photo will represent an input to the model. The photo will represent an input to the model. देखिए, but we also require an output for the photo. अब हमें फोटो के लिए आउटपुट भी चाहिए. ठीक है, द फोटो विल रिप्रेजेंट एन इनपुट टू द मॉडल, और आउटपुट भी चाहिए. अब देखिए प्रियंवदा, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आउटपुट देखिए कैसा होगा. न्यू शेयर, यहां पे आउटपुट क्या होगा? इमेज तो आप सबको समझ में आ गई दोस्तों. एक सेकंड, दोस्तों देखिए, इमेज हो गया इनपुट पे,
आउटपुट में देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए ऐसे बनाऊंगा टारगेट कॉलम, पहली इमेज का पहला रो का डेटा। यहां पे देखिए 17 कैटेगरीज होंगी दोस्तों। देखिए जितनी 17 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी, वाटर, रिवर, क्लियर वाटर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके 17। अब मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ, देखिए कैसे मल्टी लेवल करूंगा। अगर इसमें वाटर भी है, रिवर भी है, क्लियर वाटर भी है, तो तीनों को 1, बाकी 0 0। मान लीजिए इसमें ये है तो बाकी 0 0। इस तरीके से होगी वन हॉट इनकोडिंग दोस्तों, है ना। इस तरीके से होगी वन हॉट इनकोडिंग। तो ये हमारा तरीका होगा दोस्तों। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, चलो। The photo will represent an input to the model, but we also require an output for the photo. We can then retrieve the tags for the loaded image using the file name without the extension, using the prepared file name to tags mapping. Prepared file name to tags mapping prepared with the create file mapping function developed in the previous section. अब देखिए हम लोगों ने फाइल मैपिंग बनाया है, फाइल नेम स्पेस कोलन -1, लास्ट के लास्ट 4 तक, इसको हम लोगों ने टैग दिया गेट टैग्स। create tag mapping, create file mapping, but we need to do one hot encode the tags for the image. This means that we will require a 17 element vector with a 1 value for each tag represent. We can get the index of where to place the 1 values from the mapping of tags to integers created via the create tag mapping function developed in the previous section. The one hot encode function below implements this. Given a list of tags for an image and the mapping of tags to integer as argument, and it will return a 17 element numpy array that describes a one hot encoding of the tags of one photo. एक फोटो का 17 टारगेट कॉलम के हिसाब से टैग करना है। तो देखिए वन हॉट इनकोड एक फंक्शन बना रहा हूं, टैग्स और मैपिंग, 2 आर्ग्यूमेंट है। जीरोस लेंथ ऑफ मैपिंग डेटा टाइप uint8, मैपिंग क्या है, जो हमारी वो 17 वाली जो भी आएगी, 0 लेंथ ऑफ मैपिंग। अब एनकोडिंग इसको सेव किया, लेंथ ऑफ मैपिंग डेटा टाइप uint8, 0 का 17 का 0 बना रहा हूं मैं, यानी एक रो बना रहा हूं जिसमें 17 जीरो होंगे। ठीक है, अब इस 0 में जाकर मैं वैल्यू फिल करूंगा। अब देखिए इसको नाम दिया एनकोडिंग। अब मैंने चला फॉर टैग इन टैग्स, तो एक एक टैग नाम आ रहा है। एनकोडिंग में क्या किया, मैपिंग, जो मेरी मैपिंग है, देखिए मैपिंग क्या है, ये यहां पे जो मैपिंग है, ये मैपिंग है ना। ठीक है, इसका की वैल्यू पेयर मैं लेके उसको वैल्यू फिल करूंगा 1010, जो मैंने अभी फोटो बना के दिखाई थी। ठीक है, तो यहां पे टैग डाला, मतलब मैपिंग में एग्रीकल्चर, तो उसकी वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आई वहां पे मैंने 1 असाइन कर दिया। तो ये हर वहां पे क्या होगा, जहां जहां कोई टैग होगा जो नाम मैच होंगे वहां 1 हो जाएगा, बाकी 0 0, और रिटर्न कर देगा एक फोटो की एनकोडिंग, जो 17 के हिसाब से मैंने फोटो दिखाई थी। लोड डेटा सेट, लोड ऑल इमेजेस इन मेमोरी। Now load the input photos and output one hot encoded vector elements for the entire training dataset. The load underscore dataset function below implements this. Given the path to the JPEG image, given the path to the JPEG images, the mapping of files to tag, and the mapping of tags to integers as inputs.
It will return numpy arrays for the x and y elements for modeling. We now load the input photos and output one hot encoded vector elements for the entire training data set. Now load the input photos and output one hot encoded vector elements for the entire training data set. Elements for the entire training data set. Now load the input photos and output one hot encoded element for the entire training dataset. The load underscore dataset function below implements this given the path to the JPG image. The mapping of files to tags and the mapping of tags to integers as inputs. It will return numpy array for the x and y element for modeling. देखिए load all images into memory. देखिए def load underscore dataset, path, फाइल मैपिंग, टैग मैपिंग, ठीक है। फोटोज टारगेट यानी इनपुट आउटपुट, दो ब्लैंक लिस्ट बनाया मैंने। फोल्डर पे मैंने लिस्ट dir फंक्शन लगा दिया, तो क्या करेगा, इस फोल्डर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम देगा। मैंने एक एक को उठाया, इसमें क्या फोटोज हैं, एक फोटो को उठाया, लिस्ट डायरेक्टरी क्या करता है, नाम देता है, तो फोल्डर में उठाया, एक फोटो का नाम आया। अब मैं लोड img फंक्शन कर रहा हूं इमेज लोड का, तो पाथ जो मेरे पूरे फाइल का पाथ है उस फोल्डर का, प्लस फाइल नेम, ये उस फाइल का नाम, टारगेट साइज 128 लोड इमेजेस, फोटो आ गई, इमेज टू एरे, इमेज को एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां मैंने फोटो डाले, डेटा टाइप uint8, ठीक है। गेट टैग्स फाइल अंडरस्कोर मैपिंग, फाइल नेम स्पेस कोलन -4 यानी फाइल में लास्ट का 4 छोड़ के ये टैग्स ले लिया। वन हॉट इनकोड अभी ऊपर बनाया था, टैग्स टैग मैपिंग टारगेट, इसे टारगेट बन गया। देखिए फोटो लोड हो गई, इमेज टू एरे ये, और ये टारगेट, दो चीजें बन गई। फोटोज में मैंने फोटोज नाम के पैकेज में मैंने फोटो अपेंड कर दिया। नाउ इन टारगेट्स नाम के इस ब्लैंक लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया टारगेट, ठीक है। अब ये सब कर दिया, जब पूरा फोल्डर खत्म हो जाएगा तो इस फोटोज और टारगेट में आ गया। मैंने एज एरे फंक्शन नमपाई का एज एरे नमपाई का एरे बना रहा हूं, इसमें फोटोज को डाला, डेटा टाइप uint8, ये x में मेरा इनपुट आ गया सारा फोटोज का। एज एरे टारगेट में डाला, डेटा टाइप uint8, ये y में आ गया। रिटर्न x और y, लोड डेटा सेट, इंपोर्ट numpy as np डॉट एरे 10 20 30 40 50 स्पेस कोलन -3, ये बस दिखाने के लिए है, ठीक है। ये आ गया हमारा सारा फोटोज। अब आते हैं, this will load the entire training data set into memory and may require at least 128 by 128 by 3 channel into 40,479 data sets. Images multiplied by 8 bits. So this will load the entire training data set into memory and may require at least इतना space से चाहिए। 128 by 128 of 3 channels multiplied by 40,479 images and 8 bits of image are about 2 gigabyte या 2 GB of RAM just to hold the loaded photos. If you run out of memory here or later when modeling, when pixels are 16 or 32 bits, try reducing the size of the loaded photos to 32 by 32. आप reduce करने की कोशिश कीजिए, try कीजिए reduce करने की the size of the loaded photo to 32 by 32 and or stop the loop after loading 20,000 photograph. Once loaded, we can save them numpy array to file for later use. We can use the save or savejet, दो फंक्शन है, save या savejet फंक्शन से हम उन्हें सेव कर लेंगे और डिपेंड करता है कि आप कितना फोटो सेव करना चाहते हैं। To save the array direction, instead we will use the savejet compressed savejet underscore
save z underscore compressed function, numpy function to save both arrays in one function. तो हम save z underscore compressed numpy function का यूज कर सकते हैं to save both arrays in one function, call in a compressed format, saving a few more megabytes. Loading the arrays of smaller images loading the arrays of smaller images will be significantly faster than loading the raw JPG images each time during modeling. तो save z underscore compressed में planet underscore data dot npg मतलब numpy के फॉर्मेट में x और y इनपुट और आउटपुट दोनों को हमने सेव कर दिया भैया. We can tie all this together and prepare the planet dataset for in-memory modeling. ठीक है, तो सारा चीज हम लोग एक जगह लिख रहे हैं. From operating system OS हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लिस्ट डायरेक्टरी. From numpy import zeros, from numpy import as array, from numpy import save z underscore compressed, from pandas import read underscore csv, from keras dot preprocessing dot image import load underscore img, from keras dot preprocessing dot image import img to array. Def create tag mapping underscore csv, फाइल मैपिंग, वन हॉट एनकोडिंग, लोड डेटा सेट. और ये हमारा ट्रेड v2 csv जिसमें 5 इमेजेस के नाम है. क्रिएट टैग फोल्डर xy प्लैनेट डेटा सेट. और ये मेरा 40,000 इतना डेटा और ये टारगेट कॉलम सेव हो गया दोस्तों. नाउ द डेटा सेट विल बी लोडेड इजिली. सिंपल numpy का लोड फंक्शन यूज करना है. फ्रॉम numpy import लोड planet underscore data dot npg लोड हो गया, इसको नाम दिया डेटा. डेटा में air 0 यानी 0 इंडेक्स पे क्या है तो x है, डेटा air 1 तो y है. अलग अलग हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट को किया. x डॉट सेव y डॉट सेव कर लिया तो ये देखिए सेव आ गया. मॉडल इवेल्युएशन मीजर. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर. ये समझना कि मॉडल को इवेल्युएट करने का क्या तरीका है. देखिए model evaluation measure. Before we start modeling, we must select a performance metric. Before we start modeling, we must select a performance metric. Classification accuracy is often appropriate for binary classification tasks with a balanced number of examples in each class. In this case, we are working neither with a binary or multi-class classification task. Instead, it is ये multi-class की नहीं, ये multi-level है classification task, and the number of labels are not balanced और number of labels balanced नहीं है. दोस्तों याद है मैं आप लोग को पढ़ाता था इम्बैलेंस मशीन लर्निंग. इम्बैलेंस में क्या है, हम F1 स्कोर कैलकुलेट करते थे और हमें फॉल्स नेगेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट थे तो F बीटा स्कोर कैलकुलेट करते थे. यहां भी सेम वही चीज है. Since labels are not balanced, task and the number of labels are not balanced. मुझे नहीं, आप पहले पूछते हैं क्या है. हाँ, जेडाई ऑनलाइन का होगा तो रिजेक्ट करना है. ठीक है, एक सेकंड प्रिय बता. तो दिस इज द रीजन. तो दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग एफ बीटा स्कोर. अब यहां पे दोस्तों हम एफ बीटा स्कोर कैलकुलेट करेंगे. एफ बीटा स्कोर ही हमें सही रिजल्ट दे पाएगा. समझना है कि एक्यूरेसी के नाम पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हमें एक्यूरेसी दिखानी है और हमने कुछ और मीट्रिक दिखा दिया. तो सही मीट्रिक का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे अगर हम सही मीट्रिक नहीं दिखाएंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट दैट इज नॉट गुड थिंग. Since the target column is multi-label and all the columns are not balanced,
and all the columns are not balanced, we have to use here F beta score. तो दोस्तों यहां पे हमें F beta स्कोर कैलकुलेट करना है. चलिए, so it is a multi-level classification task and the number of levels are not balanced, with some used more heavily than others. As such, the Kaggle competition recognizes choose the F beta metric, also called F beta, especially the F2 score. This is a metric that is related to F1 score, also called F measure. The F1 score calculates the average of the recall and precision. You may remember that the precision and recall are calculated as follows. Precision is equal to recall is equal to true positives plus false positives and divide. ठीक से आ नहीं पाया फार्मूला, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा. और F beta is 1 plus beta का square into precision and recall divided by beta precision plus recall. मैं फार्मूला ही उठा लेता हूं एक सेकेंड. F beta F1 is 4 फार्मूला इन लैटेक्स. ये है अरा फार्मूला. प्रिसीजन एग्जॉस्टिव डेड क्या है? अरे ये क्या बकवास फार्मूला लिख दिया इसमें. F1 स्कोर कहाँ है? ये है. Premada, are you there? हाँ, I'm here. लैटेक्स क्या है? ये फार्मूला लिखने का तरीका है. ये देखिए आ गया. ठीक है, F बीटा भी लिख लेते हैं. F1 हो गया तो फार्मूला तो पता ही है, इतना टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, 1 प्लस बीटा, सेम फार्मूले में 1 प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे 2 की जगह बीटा मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ प्रिसीजन में. तो ये बीटा
बीटा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एफ बीटा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी क्लास है और प्लस मल्टी लेवल है और सारे लेवल्स इम्बैलेंस्ड है। तो ऐसे जगहों में F1 स्कोर या एफ बीटा स्कोर कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ऐसे कंडीशन में एफ बीटा स्कोर करते हैं, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। the F1 is the mean of these two scores. अच्छा, a common value of beta is 2. बीटा की कॉमन वैल्यू 2 होती है, and this was the value used in the competition where recall valued twice as highly as precision, जिसमें रिकॉल की वैल्यू को हमने दुगना महत्व दिया है, where recall value twice as highly as precision. This is often referred to as the F2 score. The idea of positive and negative class only makes sense for a binary classification problem. As we are predicting multiple classes, the idea of positive and negative and related terms are calculated for each class in a one versus rest manner, then averaged across each class. The scikit-learn library, अब देखिए क्या है कि ये बाइनरी के लिए ही, हमारा scikit-learn लाइब्रेरी में बाइनरी के लिए ही कैलकुलेट होता है, यानी 2 क्लासेस के लिए ही हम एफ स्कोर कैलकुलेट करते हैं। एज वी आर प्रेडिक्टिंग मल्टीपल क्लासेस, द आइडिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड related terms are calculated for each class, and related terms are calculated for each class in a one versus rest manner. तो हम लोग क्या करते हैं, द आइडिया ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड रिलेटेड टर्म्स आर कैलकुलेट फॉर ईच, यानी एक के वर्सेस, यानी 17 कैटेगरीज है तो 1 वर्सेस रेस्ट ऑफ द 16 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, इसी को OVR यानी 1 वर्सेस रेस्ट कहते हैं। देन एवरेज अक्रॉस ईच क्लास। The scikit-learn library provides an implementation of f beta via the f beta score function. We call this function to evaluate a set of prediction and specify a beta value of 2 and the average argument set to sample. अब दोस्तों यही चीज हमें करना है scikit-learn का, तो कैलकुलेट अप टू स्कोर f beta अंडरस्कोर स्कोर y true comma y predicted, ठीक है, बीटा की वैल्यू 2, एवरेज इज इक्वल टू सैंपल, सैंपल्स का एवरेज ले लेंगे, ये हमारा स्कोर, ये फंक्शंस। फॉर एग्जांपल वी कैन टेस्ट दिस ऑन आवर प्रिपेयर डेटा सेट। For example, we can test this on our prepared data set. हम अपना स्प्लिट कर देंगे डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में, and then we can use to train and evaluate models on this problem. This can be achieved using the train test split and specifying a random state argument so that the same data split is given each time the code is run. We will use 70% of the training set and 30% of the test set. Train test split x comma y test set 0.3 random state is equal to 1 train x test x, ये हमारा डेटा तैयार हो गया। द लोड डेटा सेट फंक्शन, तो देखिए लोड डेटा लोड किया प्लैनेट, वही numpy का लोड फंक्शन यूज किया, planet underscore data dot npg, इसको नाम दिया डेटा r0 x और y। अब देखिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x y, जो हम लोगों ने ये उठाया डेटा, टेस्ट साइज 0.3 जो 40,000 फोटो सी, उसी में ट्रेन और टेस्ट करना। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट scikit-learn का फंक्शन लगाया तो ट्रेन x टेस्ट x ट्रेन y टेस्ट y आ गया, प्रिंट कर लिया सबका सेम, रिटर्न करवा लिया ट्रेन x ट्रेन y टेस्ट x टेस्ट, ठीक है। We can make a prediction of all classes or all tags for all photographs. For example, one values in the one hot encoded vector. तो चलिए, from numpy import load, from numpy import ones, from numpy import as array, from scikit-learn.model underscore selection import train test split, from scikit-learn.matrix import f beta score, make all one prediction. अब देखिए, once
train y dot shape 1 यानी नंबर ऑफ रोज आ गई कुछ 30,000. फॉर इन रेंज train y dot shape 0 शेप 0 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम. तो ये भी 30,000 आ गई. तो यहां पे एक वैल्यू आ रही है. एक टारगेट कॉलम के लिए ट्रेन y डॉट शेप 1 उसका 1 शेप ले रहा है. तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम. तो एक कॉलम आ गया. इसको वंस की मैट्रिक्स में डाल दिया. तो ये क्या करेगा 1 1 1 1 बना देगा. मेक ऑल वन प्रेडिक्शन ट्रेन अंडरस्कोर y हैट. ये हमारा ट्रेन अंडरस्कोर y हैट प्रिडिक्टेड आ गया. समझिए हम अभी बना रहे हैं. we can then make a prediction of all classes or all tags for all photos. One value in the one hot encoded vector. सेम यही हम लोगों ने इसका भी 1 1 कर दिया. ये हम लोगों ने जानबूझकर प्रेडिक्शन बनाया कुछ टेस्टिंग के लिए. देखिए सब 1 1 1 1 बना लिया हर एक रो के लिए 17 17. द प्रेडिक्शन कैन देन बी इवेल्युएटेड. अब आते टेस्ट करते हैं. इस प्रेडिक्शन को इवेल्युएट करते हैं using the scikit-learn f beta score function with the two values in the train and test data set. F beta score f beta underscore score train y actual value predicted value to average is equal to samples. मैं इसको ऐसा कॉल कर देता हूं. कॉल किया मैंने. ठीक है. अब मैं यहां पे रन करता हूं तो ये सिर्फ टैब बता लेते हैं. देखिए पहले वाइट एफ बीटा स्कोर में पहले ट्रू है एक्चुअल वैल्यू देनी है, फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू देनी है, फिर बीटा की वैल्यू देनी है दोस्तों. तो ट्रू क्या है बीटा की वैल्यू है और एवरेज ले रहा है सैंपल्स का. एफ बीटा स्कोर टेस्ट वाई है बीटा 2 एवरेज सैंपल्स टेस्ट स्कोर आ गया. चलिए दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं एवरेज इक्वल टू सैंपल? क्योंकि हमारे पास यहां पे 17 कैटेगरीज है और ये एफ बीटा स्कोर केवल एफ बीटा स्कोर दोस्तों केवल बाइनरी के लिए बना है. तो जब बाइनरी के लिए बना है तो हमें क्या करना है दोस्तों? एवरेज इक्वल टू सैंपल्स करना है ताकि डिफरेंट 16 17 कैटेगरीज के लिए ये अप्लाई हो सके. Tying this together, the complete example is listed below. NumPy import load from NumPy import 1 as array scalar model selection train test split f beta score load data set. लोड डेटा सेट फंक्शन को कॉल किया तो ट्रेन एक्स ट्रेन वाई टेस्ट वाई एज एरे ट्रेन अंडरस्कोर वाई हेड टेस्ट बीटा एफ बीटा. ठीक है. और ये हम लोगों ने बना लिया लोड डेटा सेट एज एरे टेस्टिंग कर ली एफ बीटा स्कोर फंक्शन. ठीक है. अब चलिए रनिंग दिस एग्जांपल फर्स्ट लोड द prepared data set, then split it into train and test set, and the shape of the prepared data set is reported. We can see that we have a little more than 28,000 examples in the training data set and a little more than 12,000 examples in the test set. Next, the all one predictions are prepared and then evaluated and the scores are reported. We can see that an all ones prediction for both data set results in a score of about 0.48. तो हमें ट्रेन पे 0.48 की एक्यूरेसी मिल रही है. ठीक है. एफ बीटा. ठीक है. सब वंस किया था टेस्टिंग कर रहे थे दोस्तों बस एफ बीटा स्कोर कैसा काम कर रहा वो समझाने के लिए. We will require a version of the f beta score calculation in Keras to use as a metric. हमें f beta स्कोर का एक वर्जन लेना होगा. ठीक है. जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते. Keras used to support this metric for binary classification problem. ठीक है. Keras का हमको f beta स्कोर का Keras to use as metric. Keras used to support this metric for binary classification problem, that is 2 classes, prior to version 2.0 of the library. This code can be used as a basis for defining a new metric, function that can be used with Keras. A version of this function is also proposed in a Kaggle kernel titled. A version of this function is also proposed in Kaggle kernel titled f beta score for Keras 5.
दिस न्यू फंक्शन इज लिस्टेड। तो एक पेपर है रिसर्च पेपर में, कैगल कर्नल टाइटल एफ बीटा स्कोर फॉर केरास, दिस न्यू फंक्शन इज लिस्टेड बिलो। अब आते हैं, देखिए फ्रॉम केरास इंपोर्ट बैकएंड, केरास इंपोर्ट बैकएंड। देखिए एक केरास में से बैकएंड नाम का एक फंक्शन है जिससे हम बैकएंड में जाके कुछ फॉर्मूलाज को ट्वीक कर सकते हैं, यानी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एफ बीटा नाम का एक फंक्शन बना, y2 y प्रेड बीटा इज इक्वल टू 2, 3 पैरामीटर्स, बैकएंड डॉट क्लिप। अब बैकएंड फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं, क्लिप कर रहा हूं y प्रेड, ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है इसको क्लिप कर रहा हूं 0 या 1 में। ठीक है, जो 0 के करीब होगी उन सबको 0 कर देगा क्लिप फंक्शन, और जो 1 के करीब होगी उसको 1 कर देगा, उसको y प्रेड बोला। इसके बाद मैंने बैकएंड डॉट सम कर दिया, ठीक है, क्या बैकएंड डॉट क्लिप y ट्रू मल्टीप्लाइड बाई y प्रेड। तो एक्चुअल जो वैल्यूज हैं और प्रिडिक्टेड जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको 0 और 1 कर देंगे। तो 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, यानी इसमें भी 1 है उसमें भी 1 है, ट्रू पॉजिटिव्स निकाल रहे हैं, बाकी 0 हो गए। अगर इसको बैकएंड डॉट सम कर दें इसको पूरे को, तो हमें ट्रू पॉजिटिव्स मिल जाएगा दोस्तों। ट्रू पॉजिटिव्स क्या हुआ, उसने भी कहा कैंसर है, इसने भी कहा कैंसर है। चलिए अब बैकएंड डॉट राउंड क्लिप कर दिया y प्रेड माइनस y2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, 0 और 1। जीरो माइनस जीरो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, और 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी उल्टा हो रहा है, फॉल्स पॉजिटिव्स, है ना दोस्तों, कि y प्रेड इसने तो कहा सही है, नहीं एक्चुअली इसने कहा ट्रू, इसने कहा कैंसर नहीं है, मेरे मॉडल ने कहा कैंसर है ना, मॉडल ने कहा प्रेडिक्शन कैंसर है और इसने कहा कैंसर नहीं है, तो दोनों को उल्टा उल्टा वाला ले रहे हैं, यानी फॉल्स पॉजिटिव। फिर बैकएंड डॉट राउंड, बैकएंड डॉट क्लिक कर रहे हैं y ट्रू माइनस y प्रेड, अब ट्रू और प्रेड माइनस कर रहे हैं, फॉल्स निगेटिव्स आ गया, अब ट्रू पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव्स आ गया। इससे हम अपना प्रिसीजन निकाल लेंगे, रिकॉल, है ना। तो देखो प्रिसीजन क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें हम जोड़ रहे हैं बैकएंड डॉट एप्सिलॉन, एक एरर जोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेट रिकॉल ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव्स, ये तुम्हारा रिकॉल है, बैकएंड डॉट इसमें एप्सिलॉन भी जोड़ दिया, कैलकुलेट एफ बीटा, बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेट एफ बीटा एवरेज अक्रॉस ईच क्लास, बीटा का स्क्वायर कर दिया, बीबी नाम दिया। अब एफ बीटा स्कोर क्या हो गया दोस्तों हमारा, बैकएंड डॉट मीन वन प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल प्लस बैकसाइलर बैकएंड डॉट एप्सिलॉन। हो गया हमारा फॉर्मूला वन वर्सेस रेस्ट के लिए, मल्टी लेवल के लिए, मल्टी क्लास के लिए। तो ये है दोस्तों, हमें ये फार्मूला रट ले रहा है ये कोड कि कैसे हम मल्टी लेवल के लिए एफ बीटा स्कोर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो प्रियंका, डिड यू गेट दैट? हाँ। इसको रट लेना है इस कोड को हम्म कि एफ बीटा स्कोर हम लोगों ने कैसे अपना बना लिया, क्योंकि साइकिट लर्न और केरास का तो मल्टी क्लास के लिए है ही नहीं। हम्म तो मल्टी क्लास 17 क्लासेस के लिए हम लोगों ने कैसे अपना एफ बीटा स्कोर निकाल लिया। और जब मल्टी क्लासेस हो तो इम्बैलेंस होता है, तो वहां पे हमें हमेशा याद रखना है एफ एफ
F2 स्कोर या F बीटा स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को नाम दिया F बीटा। अब हम लोग जब मॉडल डॉट ट्रेन करेंगे या मॉडल डॉट फिट करेंगे तो हम लोग F बीटा देंगे। तो देखिए मॉडल डॉट कंपाइल में मैट्रिक्स में हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी मल्टी क्लास के लिए। अब हम लोग अपना डिफाइंड फंक्शन F बीटा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए test this new function and compare results to the scikit-learn function as follows. Compare F beta score between sklearn and keras from numpy import load, from numpy import ones, from numpy import as array, from sklearn.model underscore selection import train test split, from sklearn.matrix import F beta score, from keras import backend, load train and test data set, load data, load planet underscore data 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 array 0 array 1 xy, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट XY टेस्ट 0.3 इतना इतना, ट्रेन इतना, F बीटा कॉल फंक्शन डाल दिया, लोड डेटा सेट ट्रेन X ट्रेन Y टेस्ट X एज एरे F बीटा स्कोर, ट्रेन Y ट्रेन X, ये तो ऊपर वाला है। ठीक है, ट्रेन F बीटा स्कोर ऑल वन स्केलर ट्रेन इतना इतना, इवेलुएट प्रेडिक्शन विद केरास F बीटा है, टेस्ट बाई ट्रेन स्कोर टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो हम लोग ये कर लेंगे। फाइल नॉट फाउंड, कोई बात नहीं। तो देखिए दोनों में सेम आई क्योंकि 1100 किया। तो ये क्या था, अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था ठीक काम कर रहा है। अब चलिए अब आते हैं अपना मॉडलिंग पे। देखिए सारा सब कुछ यहीं पे छुपा हुआ था कि टारगेट कॉलम कैसे बनाओगे, तो 17 कैटेगरीज, और मल्टी लेवल कैसे बनाओगे, तो जितनी कैटेगरीज है उतने में 1 1, अब बाकी 0 0, 3 कैटेगरीज में ट्रू है तो 1 1 3 में, बाकी 0 0। इस तरीके से टारगेट बनाया, F बीटा स्कोर कैलकुलेट करना था। उसके बाद अब कुछ नहीं इस मॉडल में है दोस्तों, इमेजेस आपकी numpy में बन के आ गई है। अब अपना मॉडल लिख दो, अब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहला बेसलाइन मॉडल सीक्वेंशियल क्लास कॉल की, मॉडल डॉट एड कर्व 2D 32 फिल्टर साइज 3x3 एक्टिवेशन रेलू, कर्नल इनिशियलाइजर H यूनिफॉर्म पैडिंग सेम, इनपुट सेम 128 128/3, मॉडल डॉट एड कर्व 2D 32 फिल्टर 3x3 एक्टिवेशन रेलू, कर्नल इनिशियलाइजर H यूनिफॉर्म पैडिंग इक्वल टू सेम, मॉडल डॉट एड मैक्स पूलिंग 2D 2x2, मॉडल डॉट एड कर्व 2D 64 फिल्टर 3x3 एक्टिवेशन रेलू, कर्नल इनिशियलाइजर H यूनिफॉर्म पैडिंग सेम, मॉडल डॉट एट एक और 64 फिल्टर पैडिंग सेम। फिर इसके बाद देखिए मैक्स पूलिंग लगा कर्व 2D, फिर मैक्स पूलिंग। ठीक है, फिर मॉडल डॉट एट फ्लैटर, उसके बाद डेंस की लेयर लगा 128 न्यूरॉन एक्टिवेशन रेलू, कर्नल इनिशियलाइजर दे दिया एक, मॉडल डॉट एट डेंस, टारगेट कॉलम में 17 कैटेगरीज है, एक्टिवेशन मल्टी क्लास के लिए सिग्मोइड। हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो SGD कॉल किया, लर्निंग रेट 0.01, मोमेंटम 0.9, इसको नाम दिया ऑप्ट, मॉडल डॉट कंपाइलर ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप्ट, लॉस इज इक्वल टू बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, मेट्रिक इज इक्वल टू F बीटा। ठीक है, द डिफाइंड मॉडल फंक्शन बिलो टाइज। तो देखिए डिफाइंड मॉडल, देखिए इन अंडरस्कोर से पहली बार में तो इनपुट बताना पड़ता है, तो इनपुट 128/128 की इमेज है जिसके 3 चैनल है, आउट शेप 17। तो ये तो डिफाइंड मॉडल है, तो आप अपना 2 आर्गुमेंट बना रहा हूं बस, ये अपना पूरा मॉडल, मॉडल डॉट कम, और यहाँ पे आउट शेप यहाँ दे दिया, तो देखिए डेंस को यहाँ पे 17 लिखने की जगह सीधे आउट शेप दे दिया। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। The choice of this model as the baseline model is somewhat arbitrary. You may want to explore with other baseline model that have fewer layers or different learning rates. We can use the load dataset function developed in the previous section to load the dataset. अब वही पुराना तरीका हम लोग लाएंगे, इमेज डेटा जनरेटर या TF TensorFlow डॉट डेटा वाला फंक्शन जो एक अलग से सीट पढ़ाई थी मैंने, रीस्केल जो 1.0 to 55 डेटा जनरेटर। We can create iterators from this data generator for both the train and test set, and in this case we will use the relatively large batch size of 128 images to accelerate learning. Datagen.flow, train X, train Y, batch size 128, datagen.flow, test X, test Y, batch size 1 क्योंकि इसमें batch size बताना पड़ता है, तो 128 की batch size ले रहे हैं। train IT यानी train iteration, test IT under test iteration,
है ना। द डिफाइंड मॉडल कैन देन बी फिट यूजिंग द ट्रेन इटरेटर। तो देखिए मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर जनरेटर में ट्रेन अंडरस्कोर इट डाला, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों है, याद है ना इमेज डेटा जनरेटर। देखिए कैसे काम करता है, पहले इमेज डेटा जनरेटर कॉल किया, यहाँ पे जो जो आप करना चाहते हो वो दे दो, ये फंक्शन है बस, इसको नाम दिया डेटा जेन, ये इमेज डेटा जनरेटर फंक्शन है। फिर उसके बाद डेटा जेन डॉट फ्लो में इनपुट आउटपुट और बैच साइज, ट्रेन इट टेस्ट इट कर लिया। अब इसको मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर जनरेटर में ट्रेन अंडरस्कोर इट स्टेप्स अंडरस्कोर पर इपोक बताना पड़ता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आईटी, क्योंकि अगर 128 में कुछ आगे पीछे हो गया तो बताना पड़ेगा लेंथ ऑफ ट्रेन आईटी स्टेप्स पर इपोक, तो 128 के हिसाब से उसको तोड़ लेगा। मॉडल डॉट फिट जनरेटर, इसको नाम दिया हिस्ट्री, टेस्ट अंडरस्कोर इट वैलिडेशन स्टेप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टेप्स, वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर आईटी, वैलिडेशन स्टेप लेंथ ऑफ टेस्ट है इपोक 50, वर्बोस इज इक्वल टू 0, और ये हमारा मॉडल डॉट फिट हो गया, इतना बड़ा फंक्शन, इसको हम लोगों ने हिस्ट्री नाम दिया। Once fit, we can calculate the final loss and F beta scores on the test data set to estimate the skill of the model. हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं पता नहीं क्या सोचने लग गया था। सॉरी सॉरी, भूल गया मैं क्लास में। सो कोई ओके, बात नहीं। name model is not defined. Once fit, we can calculate the final loss and F beta scores on the test data set to estimate the skill of the model. Model dot evaluate underscore generator, जब इमेज डेटा जनरेट करते हैं दोस्तों तो आपको पता है फिट अंडरस्कोर जनरेटर, मॉडल इमेज डेटा जनरेटर को नाम दिया डेटा जेन डॉट फ्लो, है ना। और फिर मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर जनरेटर, फिर मॉडल डॉट इवेल्युएट अंडरस्कोर जनरेटर, यहाँ टेस्ट अंडरस्कोर इट डाला, स्टेप्स डाला, लेंथ ऑफ टेस्ट आती वर्बोस इतना, और ये हमारा लॉस और एफ बीटा स्कोर कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया था फिट अंडरस्कोर जनरेटर फंक्शन कॉल टू फिट द मॉडल। इसको ऐसा कर देते हैं, the fit underscore generator function called to fit the model returns a dictionary containing the loss and F beta scores recorded। प्रियंवदा ये वाला प्रोजेक्ट एकदम रट लो, जब कोई पूछे कि आपने इमेज रिकॉग्निशन ये पूरा प्रोजेक्ट बताना, इसमें बताना कि मुझे दो प्रॉब्लम आई थी सर। पहला तो कि इमेज धुंधली थी, तो मुझे एक डीप न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ा, बहुत ही ज्यादा लेयर्स वाला। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी इसमें फंडामेंटल, वो ये थी सर कि इसका टारगेट कॉलम कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये मल्टीपल कैटेगरी नहीं है, मल्टी कैटेगरी, ये मल्टी लेबल है ना। ऐसा नहीं है कि 17 कैटेगरी में कोई एक हो रही है, 17 कैटेगरी में कोई एक हो रही है बाकी नहीं हो रही है, किसी और में कोई एक हो रही है, ये 17 कैटेगरी में एक से ज्यादा चीजें हो रही है। तो कैसे बनाना था, तो बताना पूरा बना कि मैंने एक से ज्यादा वालों को 1 1 कर दिया, बाकी को 0 0 किया। दूसरा सर प्रॉब्लम इसमें आया कि इसमें टारगेट कॉलम में तो क्या था कि मल्टीपल कैटेगरीज थी, अब सारी कैटेगरीज तो बैलेंस है नहीं, तो मुझे एफ बीटा स्कोर कैलकुलेट करना था। अब प्रॉब्लम यह है कि सर एफ बीटा स्कोर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए है कि साइकेट्लॉन और केरास में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और मल्टी लेवल के लिए कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए एक रिसर्च पेपर से मैंने ये चीज बनाई और उसका ये फॉर्मूला लिखा और फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया, है ना। और फिर अपना बाकी न्यूरल नेटवर्क तो बनाया इमेज रिकॉग्निशन का। तो इस तरीके से अपनी बात को रखना है।
द समराइज अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक फंक्शन विल क्रिएट। अब हम समराइज अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सब प्लॉट 2 रोज 1 कॉलम का 1 प्लॉट, पाई प्लॉट डॉट टाइटल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, पाई प्लॉट डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री लॉस, कलर इज इक्वल टू ब्लू, लेबल इज इक्वल टू ट्रू ट्रेन, पाई प्लॉट डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री वैलिडेशन अंडरस्कोर, कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, लेबल इज इक्वल टू टेस्ट, पाई प्लॉट डॉट सब प्लॉट 2 रोज 1 कॉलम का 2 प्लॉट, पाई प्लॉट डॉट टाइटल एफ बीटा, पाई प्लॉट डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री एफ बीटा, color is equal to blue, label is equal to train, pie plot dot plot history dot history validation underscore beta, color orange, label test। अब ये सब हमने कर दिया और system dot argv dot 0 dot split backslash minus n फाइल नेम। ये क्या है कि ये फंक्शन जब ऐसा बनाते हैं और आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो argv आर्गुमेंट v 0, तो ये सिस्टम के थ्रू जब पास करना होता है कमांड लाइन के थ्रू तो ये करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप फाइल नेम डॉट स्प्लिट -1 यानी CSV USV हटा के केवल आगे का नाम लेगा। पाई प्लॉट डॉट सेव, फिर फाइल नेम डॉट प्लॉट अंडरस्कोर प्लॉट डॉट png हम लोग सेव करते हैं। We can tie this together and define a function run test harness, run underscore test harness to drive the test harness including the loading and preparation of the data as well as definition, fit and evaluation of the model। run the test harness for evaluating a model, run test harness। तो देखिए लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, इसको हमने दिया ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई, इमेज डेटा जनरेटर, डेटा जेन डॉट फ्लो, टेस्ट मॉडल डिफाइन अंडरस्कोर मॉडल जो ऊपर बना है उसको कॉल कर लिया, मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर, इसको नाम दिया मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर जनरेटर, ट्रेन आईटी स्टेप पर इको कितना, हिस्ट्री वैलिडेशन डेटा सेट, ये हो गया। सॉरी ये तो पूरा फंक्शन ही है यहाँ पर। मॉडल डॉट इवैल्यूएट अंडरस्कोर जनरेटर टेस्ट आईटी स्टेप लेंथ टेस्ट आईटी वर्बोस 0 लॉस एंड बीटा, समराइज अंडरस्कोर डायग्नोस्टिक उसके बाद कॉल किया, इसमें हिस्ट्री डाल दिया, ये समराइज डायग्नोस्टिक, तो ये प्लॉट भी बना देगा। तो ये हो गया मेरा पूरा फंक्शन एक जगह कॉल हो गया जो ऊपर की सारी चीजें कॉल कर देगा। The complete example is here. Import says numpy load train test image data generator from keras.preprocessing.image, import image data generator, sklearn.model selection train test split, matplotlib import pyplot, keras.models import sequential, keras.layers and 2D keras.layers import maxpooling 2D keras.layers in dense flatten SGD, load data set, f beta, define model, summarize underscore diagnostics, run test harness and run test harness को कॉल किया तो सारा एग्जांपल हो गया। तो एफ बीटा 0.83, तो 83% एक्यूरेसी आ गई हमारी। कुछ ए फिगर इज आल्सो क्रिएटेड एंड सेव, हाउ टू इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। तो अब फिर वही अब आ गया बस सिंपल सी चीज है कि मॉडल है ये जो हमारा ये एल्गोरिथम इसमें चेंजेस हो, तो इसमें ड्रॉप आउट लगा रहे हैं। तो सीक्वेंशियल क्लास कॉल किया, कल 2D 32 3x3 ये इनपुट है, और इसके बाद फिर एक 2 लेयर कर्व की लगाई, फिर मैक्स पूलिंग, फिर ड्रॉप आउट, एक ड्रॉप आउट हो गया, फिर 2 लेयर कर्व की, एक मैक्स पूलिंग, एक ड्रॉप आउट, 2 लेयर कर्व की, एक मैक्स पूलिंग, एक ड्रॉप आउट, फ्लैटन डेंस, फिर ड्रॉप आउट, फिर फाइनल डेंस, एसजीडी मॉडल डॉट कंपाइल, इसको अपने पूरे मॉडल में डाल दिया बीटा ये सब के साथ, तो हमारी एक्यूरेसी कुछ आ गई 0.859, थोड़ी सी बड़ी है। रिव्यूइंग द लर्निंग का इमेज डेटा ऑगमेंटेशन, तो आइए इमेज डेटा ऑगमेंटेशन कर लेते हैं। इमेज डेटा ऑगमेंटेशन में देखिए क्या कर रहे हैं, इमेज डेटा जनरेटर मैंने रीस्केल क्या किया 1/2, फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया, वर्टिकल फ्लिप किया, रोटेशन रेंज 90, इमेज डेटा जनरेटर। और अच्छा एक बात और प्रियम बता, देखिए आपको आवाज आ रही है? हाँ देख रही हूँ। देखिए हमेशा याद रखिए ट्रेन, देखिए ट्रेन डेटा में हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, रोटेशन ये सब कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट डेटा में नहीं कर रहे हैं। देखिए टेस्ट डेटा में केवल रीस्केल किया है। तो याद रखिए हमेशा प्रेम बता कि ट्रेन डेटा में हम ये सारा जो है डेटा ऑगमेंटेशन करते हैं, इमेज ऑगमेंटेशन। टेस्ट डेटा में इमेज ऑगमेंटेशन नहीं करते हम, यहां पे केवल रीस्केल किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है ट्रेन डेटा, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा जेन डॉट फ्लो, ट्रेन टेस्ट डॉट फ्लो, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई, ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई। चलिए हम लोगों ने डेटा ऑगमेंटेशन कर लिया, तो देखते हैं क्या हुआ रिजल्ट। 0.88 और बढ़ गया। हाउ टू यूज ट्रांसफर लर्निंग, आइए इसमें ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग इन्वॉल्व यूजिंग ऑल आर पार्ट ऑफ ए मॉडल।
पूरा या उसको आप मॉडल का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। Keras provides a range of pre-trained models that can be loaded and used wholly or partially by the Keras application API. A useful model for transfer learning is one of the VGG model, such as VGG16 with VGG16 layers that at the time it was developed. Achieved top results on the ImageNet photo classifier challenger. The model is comprised of two main parts: the feature extractor part of the model that is made up of VGG block, and the classifier part of the model that is made up of fully corrected layer and the output layer. We can use the feature extraction part of the model and add a few classifier part of the model that is tailored to the Planet dataset. Specifically, we can hold the weights of all of the convolutional layer fixed during training and only train few fully corrected layers that will learn to interpret the features extracted from the model and make a suite of binary classifications. This can be achieved by loading the VGG16 model, removing the fully corrected layers from the output end of the model, then adding the new fully corrected layers to interpret the model output and make a prediction. The classifier part of the model can be removed automatically by setting the include top argument false. तो देखिए दो तरीके से हैं, पहले भी हम लोग ये ट्रांसफर लर्निंग डिस्कस कर सकते हैं कि या तो हम उसके कुल फीचर एक्सट्रैक्ट कर ले या पूरा मॉडल ले। तो देखिए डिफाइंड मॉडल इन शेप 128/3 आउट शेप 17 विच से इंक्लूड टॉप इज इक्वल टू फॉल्स, यानी टॉप जो है वो हटा देंगे हम डेंस की फाइनल लेयर। इनपुट शेप इन शेप यही शेप रख रहे हैं मॉडल, क्योंकि VGG में भी यही है, VGG के हिसाब से हमें कंफर्म करना होता है। अब मेक मार्क लोडेड लेयर एज नॉन ट्रेनेबल, तो फॉर लूप चला इन मॉडल डॉट लेयर्स, एक लेयर है लेयर डॉट ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया, फ्लैटन कर दिया मॉडल डॉट लेयर्स -1 डॉट आउटपुट, जो मॉडल डॉट लेयर में लास्ट लेयर है जो यहां से फाइनल लेयर हटाने के बाद है, डॉट आउटपुट फ्लैटन, इसको फ्लैट 1। इसके ऊपर मैंने डेंस फ्लैट 1 को देखिए ये फ्लैट 1, इसके ऊपर मैंने डेंस लगाया 128 फिल्टर्स, एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू, कर्नेल स्लाइजर एच यूनिफॉर्म इज इक्वल टू क्लास 1, डेंस आउट शेप एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्माइड, क्लास 1 इज इक्वल टू आउट। अब ये देखिए जब हम ऐसे बनाते हैं तो मॉडल में हमें इनपुट और आउटपुट को सजाना होता है, और ऐसा तब भी हम करते हैं जब हमारे बहुत सारे इनपुट्स मल्टीपल चैनल्स जिसको मॉडल में इनपुट्स में मैंने मॉडल डॉट इनपुट्स डाला, आउटपुट में आउटपुट डाला, ये वाला आउटपुट, और ये मेरा बना फाइनल मॉडल। SGD लर्निंग रेट 0.01, मोमेंटम 0.9, इसको मैंने OPT नाम दिया। मॉडल डॉट कंपाइल में ऑप्टिमाइजर इक्वल टू OPT, लॉस इज इक्वल टू बाइनरी अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, मैट्रिक्स इज इक्वल टू F बीटा रिटर्न। Once created, we can train the model as before on the training data set. Not a lot of training will be required in this case, as only the new fully connected and output layers have trainable weights. As such, we will fix the number of training epochs at 10. The VGG16 model was trained on a specific ImageNet challenge dataset. As such, the model expects images to be centered. अब देखिए क्या करें? We can train the model as before the training dataset. जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही ट्रेन करेंगे। Not a lot of training will be required in this case, as only the few fully connected and output layers have trainable weights, क्योंकि कुछ ही में trainable weights है। As such, we will fix the number of training epoch at 10. The VGG16 model was trained on a specific ImageNet challenge dataset. As such, the model expect images to be centered. क्योंकि VGG16 में भी किया तो हमें images को centered करना है। That is to have the mean pixel values from each channel, यानी कि हर एक चैनल से मीन पिक्सल वैल्यू निकालना और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है हर एक सेल की वैल्यू से, तो डेविएशन देखना एक तरीके से। रेड, ग्रीन एंड ब्लू एज कैलकुलेटेड ऑन द ImageNet ट्रेनिंग डेटासेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट। Keras provides a function to perform this preparation
to perform this preparation for individual photos via the pre-processes underscore input. Up Keras provides a function to perform this preparation for individual photos via the pre-process underscore input function. Nevertheless, we can achieve the same effect with the image data generator by setting the feature-wise center argument to true, and manually specifying the mean pixel values. Even manually specifying the mean pixel values to use when centering as the mean values from the image and training data set. 123 वर्सेस और ये तीनों चैनल का मीन निकाल लिया और हर एक चैनल पे उसके हर एक सेल से सबट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया मीन निकालना। तो देखिए इमेज डेटा जनरेटर फीचर वाइज सेंटर, अब ये वाली मैंने यहाँ पे डाल दी इमेज डेटा जनरेटर, ये है फीचर वाइज सेंटर, सिंपल ट्रू डेटा जन डॉट मीन, देखिए आ गया। पूरा कोड हम देखते हैं दोस्तों, द फुल कोड, लिस्टिंग ऑफ द VGG16 मॉडल फॉर ट्रांसफर लर्निंग ऑन द प्लैनेट डेटा सेट इज लिस्टेड। VGG16 transfer learning on the planet dataset. Import sys from numpy import load, from matplotlib import pyplot, from sklearn.model underscore selection import train test split, from keras import backend, from keras.layers import dense, from keras.layers import flatten, keras.optimizers import sgd, keras.applications.vgg16 import vgg16, keras.models import model, keras.preprocess.ignore import image data generator, load dataset, fbeta define model. देखिए इनसे 120 128 3 VGG16 into top is equal to false, for layers in model.layers, layers.trainable is equal to false, flatten model.layer -1.output is equal to flat one, dense 128 activation reroute kernel underscore initializer is equal to h uniform, flat one is equal to class 1, dense out shape activation is equal to sigma class 1 is equal to output. Model input is equal to model.inputs, output is equal to output is equal to model, SGD learning rate 0.01, momentum 0.9 opt, model.compile optimizer is equal to opt, loss is equal to binary cross entropy, metric is equal to f beta return model, समराइज हमने रन टेस्ट में सारी चीजें कॉल कर दी, देखिए 0.860 आ गया हमारा f beta। तो देख लीजिए किस तरीके से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। VGG16 मॉडल वाज डिजाइन्ड, अब देखिए और इसमें क्या कर सकते हैं, VGG16 मॉडल के साथ खेलना है। देखिए VGG16 मॉडल वाज डिजाइन्ड टू क्लासिफाई फोटोग्राफ्स ऑफ ऑब्जेक्ट into one of 1000 categories. As such, it was designed to pick out fine-grained features of objects. We can guess that the features learned by the model by the deeper layers will represent higher order features seen in the ImageNet dataset that may not be directly relevant to the classification of satellite photos of the Amazon rainforest. To address this, we can refit the VGG16 model and allow the training algorithm to fine-tune the weights for some of the layers in the model. In this case, we will make the 3 convolutional layers and pooling layers for consistency as trainable. The updated version of the define underscore model function is listed below. अब देखिए क्या कर रहे हैं, define model in है 128 by 3, out shape 17, VGG16 include underscore top is equal to false, input shape in shape is equal to model, for loop चलाया in models dot layer, एक layer आ रही है, layer dot trainable equal to false कर दिया। Allow last VGG block to be trainable, है ना, लास्ट VGG ब्लॉक को हम ट्रेनेबल कर, तो सबको फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब मॉडल डॉट गेट अंडरस्कोर लेयर ब्लॉक 5 अंडरस्कोर कन1 डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू 2, इस लेयर को 2 कर दिया। फिर मॉडल डॉट गेट अंडरस्कोर लेयर ब्लॉक 5 अंडरस्कोर कन2 डॉट ट्रेनेबल, इसको 2 कर दिया। मॉडल डॉट गेट अंडरस्कोर लेयर ब्लॉक 5 अंडरस्कोर कन3 डॉट ट्रेनेबल, इसको 2 कर दिया। मॉडल डॉट गेट अंडरस्कोर लेयर ब्लॉक 5 अंडरस्कोर कूलिंग है डॉट ट्रेनेबल 2 कर दिया। अब फ्लैटन कर दिया। अब देखिए मॉडल डॉट लेयर्स -1 डॉट आउटपुट, जो लास्ट लेयर का आउटपुट है उसको फ्लैटन करके इसको फ्लैट 1 बनाया। डेंस पे गए 128, इसको फ्लैट 1 पे लगाया। आउटपुट डेंस आउट अंडरस्कोर सेफ एक्टिवेशन सिग्मा क्लास 1, इसको आउटपुट बना दिया। SGD stochastic gradient descent, learning rate is equal to 0.01, momentum is equal to 0.9 opt,
Model.compile, optimizer is equal to opt, loss is equal to binary cross entropy, matrix F beta, return model. तो ये हमारा एक मॉडल हो गया, कुछ लेयर्स को हमने नॉन ट्रेनेबल बना दिया है, ठीक है. The example of transfer learning with VGG16 of the planet data set can then be rerun with this modification. Note, your specific results may vary given the stochastic nature of the learning algorithm. Consider running the example a few times and compare the average performance. In this case, we see a lift in model performance as compared to the VGG16 model. Feature extraction model used as is improving the F beta score from about 0.860 to about 0.879. तो 860 से 879 बढ़ गया. देखिए, the score is close to F beta score seen the baseline model with the addition of image data augmentation. ये सिमिलर है इमेज डेटा ऑगमेंटेशन के जैसा. तो हमें भारी भरकम मॉडल की जगह हम ये चला सकते हैं. Reviewing the learning curve, we can see that the model still shows sign of overfitting the training data set relatively early in the run. The results suggest that perhaps the model could benefit from the use of dropout or other regularization method. Given that we saw a large improvement with the use of data augmentation on the baseline model, it may be interesting to see if data augmentation can be used to improve the performance of the VGG16 model with the fine-tuning. In this case, the same define underscore model function can be used. Although in this case, the run underscore test underscore harness can be updated to use image data augmentation as was performed in the previous section. We expect that the addition of data augmentation will slow the rate of improvement. As such, we will increase the number of training epoch from 20 to 50 to give the model more time to converge. The complete example of VGG16 with fine-tuning and data augmentation is listed below. तो पैकेजेस कॉल किया, लोड डेटा, एफ बीटा, डिफाइन मॉडल में देखिए VGG16 लेयर, ये लेयर डाल दिया, डिफाइन लास्ट, इतना इतना इतना, समराइज, टेस्ट हार्नेस, VGG with fine tuning and data augmentation. तो देखिए एफ बीटा, डिफाइन मॉडल, ये सब हमारा वही है, समराइज. और ये देखिए इमेज डेटा जनरेटर में फीचर वाइज सेंटर ट्रू, हॉरिजॉन्टल फ्लिप ट्रू, वर्टिकल फ्लिप ट्रू, रोटेशन रेंज 90. टेस्ट में कर दिया फीचर वाइज सेंटर ट्रू, और ये देखिए 0.89 हो गई हमारी एफ बीटा की वैल्यू. तो ये है दोस्तों हमारा डेटा ऑगमेंटेशन VGG16 मॉडल विद फाइन ट्यूनिंग प्लस डेटा ऑगमेंटेशन 0.891. ये हमारा बन गया. चलिए अब आते हैं अगले स्टेप पे, हाउ टू फाइनलाइज द मॉडल एंड मेक प्रेडिक्शन. The process of model improvement may continue for as long as we have ideas for the time and resources to test them out. At some point, a final model configuration must be chosen and adopted. In this case, we will keep things simple and use the VGG16 transfer learning, fine-tuning, and data augmentation as the final model. First, we will finalize our model by fitting a model on the entire training data set and saving the model to file for later use. ठीक है, तो चलिए सेव फाइनल मॉडल. द फर्स्ट स्टेप इज टू फिट अ फाइनल मॉडल ऑन द एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट. द लोड अंडरस्कोर डेटा सेट फंक्शन कैन बी अपडेटेड टू नो लॉन्गर स्प्लिट द लोडेड डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट. तो लोड डेटा हो गया, डिफाइन मॉडल हो गया हमारा, फाइनली इमेज डेटा जनरेटर, फीचर वाइज सेंटर, हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये हो गया. द मॉडल विल बी फिट फॉर 50 इपोक. तो मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर जनरेटर में डाला, ट्रेन इट स्टेप पर इपोक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन आईटी इपोक 50. मॉडल डॉट सेव फाइनल अंडरस्कोर मॉडल डॉट एच. फाइनल अंडरस्कोर मॉडल डॉट एच क्या करेगा, उसके ढांचा और उसके वेट्स दोनों को सेव कर देगा. Note, saving and loading a Keras model required that the H5PY library is stored on your workstation. The complete example of fitting the final model on the training dataset and saving it to file is listed below. From NumPy import load, from keras.preprocessing.image import image data generator, from keras.application.vgg16 import 16, model, dense, flatten SGD, load dataset, define model, run test, final model.h5. After running this example, you will have a large 91 megabyte file, large 91 MB की फाइल बनेगी with the name final model.h5. final model.h5 की 91 MB की फाइल बनेगी दोस्तों.
आप देख रहे हैं जितना बड़ा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उतनी बड़ी फाइल बढ़ रही है। According to the mapping file for the training dataset, the file has the tags in no specific order. Agriculture, clear, primary, water. We will pretend this is an entirely new and unseen image, prepared in the required way, and see how we might use our saved model to predict the tags that the image represents. First, we can load the image and force it to the size of 128 by 128 pixel. द लोडेड इमेज, अब देखिए हम प्रिडिक्ट का फंक्शन बना रहे हैं दोस्तों, प्रिडिक्ट करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो इमेज आएगी उसे 128 by 128 पिक्सल की बनाना है। The loaded image can then be resized to have a single sample in a data set. The pixel values must also be centered to match the way that the data was prepared during the training of the model. The load underscore images function implements this and will return the loaded images ready for function classification. Load image file name, target size itna, image to array img dot resave one sample of 128 by 3. Image dot type size float 32, image minus ये तीनों चैनल से ये हो गया, क्या हो गया, फीचर वाइज सेंटर्ड हो गया। Next, we can load the model as in the previous section and call the predict function to predict the content in the image. Model.predict में ये इमेज डालेंगे और ये प्रिडिक्ट हो जाएगा। अब तो प्रिडिक्ट होगा दोस्तों, तो ये मुझे 17 वेक्टर्स का, 17 एलिमेंट्स का एक लॉन्ग वेक्टर देगा with floating point values between 0 and 1 that could be interpreted as probabilities of the model's confidence that the photo could be tagged with each known tag. We can round these probabilities to either 0 or 1 and then use our reverse mapping prepared back in the first section in the create tag mapping function to convert the vector indexes that have a one value to tag for the image. The prediction to tag function below implements this, taking the inverse mapping of integers to tags and the vector predicted by the model for the photo and returning a list of predicted tags. तो याद है शुरू में हम लोगों ने इनवर्स और मैपिंग बनाई थी, इनवर्स मैपिंग और मैपिंग, तो इनवर्स मैपिंग उठा लेंगे और प्रिडिक्शन डॉट जो हमने प्रिडिक्ट किया डॉट राउंड किया, इसको नाम वैल्यूज दिया, फॉर लूप चलाया रेंज लेंथ ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यू एक है, इफ वैल्यूज इंडेक्स i इज इक्वल टू 1, तो इनवर्स मैपिंग में ये वाला चीज डाल दो और ये तुम्हें टैग रिटर्न कर देगा। सारा फंक्शन एक जगह, टाई ऑल दिस टुगेदर, प्रिडिक्ट का दोस्तों, प्रिडिक्ट का सारा फंक्शन एक जगह, टाई ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड मेक ए प्रेडिक्शन फॉर द न्यू फोटो। द कंप्लीट एग्जांपल इज लिस्टेड बिलो। Make a prediction for a new image from pandas input read underscore csv, from keras.preprocessing.image input load underscore img, from keras.preprocessing.image input img to arrow, from keras.models input load underscore model. Create a mapping of tags to integers given the loaded mapping file. Def create tag mapping underscore csv, labels is equal to set. For I range length of mapping csv, mapping underscore tags, I dot split from space equal to tags, labels dot update tags, convert set of labels to a list to list, labels is equal to list of labels, label dot sort. ये हम लोगों ने इनवर्स वाला फंक्शन है। प्रिडिक्शन टू टैग, लोड इमेज, रन एग्जांपल, लोड इमेज, ये ऊपर वाला फंक्शन, लोड मॉडल, फिर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन टू टैग्स, ये प्रिडिक्शन टू टैग्स फंक्शन, इनवर्स मैपिंग कर देंगे, टैग आ गया। यहाँ पर हम लोग ने रन कर दिया ट्रेन v2.csv, we will create tags mapping पर गया। इस तरीके से हमारा प्रिडिक्ट का भी फंक्शन हो गया दोस्तों, और इस तरीके से हमारा इमेज रिकॉग्निशन दोस्तों खत्म हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ठीक है। तो रियल टाइम में कैसे करना है, ये सब सारा फंक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अभी 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 11:30 बन रहा है, तो 11:50 पे मिलते हैं, ओके। यस प्रियमदा, चलिए
अब मैं पानी पीने गई थी।
Okay, Priyambada, I hope you are there. हाँ मैं पानी पीने गई थी तब। अच्छा अच्छा, चलिए तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब क्या है, इसको ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा फैमिली फोटोग्राफ, अब इसमें 4-5 लोग की फोटो, तो अब कैसे उसे पहचाना जाए, है ना। तो इसका शॉर्ट में देखिए तरीका क्या होता है, देखिए मैं दिखा। एक्चुअली हम क्या करेंगे, अरे क्या हो गया, मैं भूल ही गया हूं क्या। बाउंडिंग बॉक्सेस बनाएंगे। देखिए होगा क्या इसमें, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, कि मान लीजिए ये एक इमेज है, इसमें ये पहाड़ है, ये सूरज है, ये ठीक है, ये नदी है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, इनका चेहरा है। अब इसमें सब चीज पहचाननी, तो क्या होगा, काम वही होगा इमेज रिकॉग्निशन का। कैसे, हमें बाउंडिंग बॉक्सेस बनाने हैं। ये बना लिया, 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 ये बना लिया। अब इन बाउंडिंग बॉक्सेस को उठा के निकाला, इन सब में इमेज रिकॉग्निशन कर लिया। एक मॉडल इंसानों का, तो सारे इंसानों का लेके एक मॉडल बना लीजिए और इसके अंदर जाके चेक कर लीजिए, इमेज रिकॉग्निशन कर लिया। इसके अंदर हम जाके माउंटेन्स, ठीक है, लैंडस्केप, इसमें सूरज और जो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड मॉडल रन किया, माउंटेन और ये और एरोप्लेन, और ये VGG वाला एरोप्लेन भी कर देगा। मतलब कहने का मतलब है आप ट्रेन कर लो, अपने देर सारे मॉडल ट्रेन करो, इसमें रन करो, तो हर एक में जाके ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है। अब इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये हम बॉन्डिंग बॉक्स बनाए कैसे, है ना, और कितने बनाए। अब बहुत ज्यादा बना देंगे तो उसमें चेक करते करते पता चला शाम हो गई, बहुत लेंदी वर्क हो गया, है ना। तो बड़ा एक चैलेंज है इस सही और सटीक बॉन्डिंग बॉक्सेस और कम से कम बॉन्डिंग बॉक्सेस बनाने का, है ना। तो ये चीजें हमें करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या टेक्नोलॉजीज है। अब देखिए इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। पहले RCNN फैमिली के मॉडल्स हैं। आर मतलब रीजन बेस्ड, ठीक है। फिर आता है फास्ट RCNN, फिर आता है फास्टर RCNN, और अब हो सकता है कि बहुत से नए मॉडल आ गए हों। दूसरी फैमिली है योलो। योलो का मतलब होता है यू ओनली लुक्स वंस, और ये बड़ा फेमस इसलिए क्योंकि बड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। अब योलो वर्जन 1 से लेके अभी तक कहते हैं कि लगभग योलो वर्जन 9 या 10 आ गया है ना। तो चलिए पहले इस फैमिली को पढ़ते हैं, फिर इस फैमिली को पढ़ते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या, कैसे काम करता है, फिर हम लोग मॉडल्स बनाएंगे रियल टाइम में काम करने वाले। चलिए तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ता हूं, आपको देखिए। Deep learning for object recognition, it can be challenging for beginners to distinguish between different related computer vision tasks. For example, image classification is straightforward, but the difference between object localization and object detection, यानी ऑब्जेक्ट का लोकलाइजेशन करना और डिटेक्ट करना कंफ्यूजिंग है, especially when all three tasks may be just as equally to referred as object recognition.
image recognition involves assigning a class level to an image, whereas object localization involves drawing a bounding box around one or more object in an image. Object detection is more challenging and combines these two tasks and draws a bounding box around each object of interest in the image and assigns them a class label. Together, all of these problems are referred to as object recognition. In this tutorial, you will discover a gentle introduction to the problem of object recognition and a state-of-the-art deep learning model designed to address it. Object-based convolution neural network, or RCNN, जिसको हम कह रहे हैं region-based, are a family of technique for addressing object localization and recognition tasks designed for model performance. दूसरा है YOLO, you only look once, is a second family of technique for object recognition designed for speed and real-time use. ठीक है, तो पहला मॉडल परफॉर्मेंस है, ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है, और YOLO क्या है, स्पीड बहुत तेज करता है और रियल टाइम यूज है। तो चलिए पहले समझते हैं एक एक चीज को। दोस्तों, this tutorial is divided into 3 parts. They are object recognition, RCNN family and YOLO part. तो चलिए object recognition क्या है? Object recognition is a general term to describe a collection of related computer vision tasks that involves identifying objects in digital photographs. Image classification typically involves predicting the class of one object in an image. तो object recognition और image recognition define हो गया. Object localization refer to identify the location of one or more object in an image. Most of the recent innovation in image recognition, ये आपको पता ही है, the single object localization algorithm produce a list of object categories presented in the image. The performance of a model, RCNN family. RCNN family of method refer to the RCNN, which may stand for regions with convolution neural network. Features are region-based convolution neural network developed by Ross, Girshik, et al. This includes the technique RCNN, fast RCNN, and faster RCNN, designed and demonstrated for object localization and object recognition. Let's take a look at the highlights of each of these techniques in turn. RCNN. The RCNN was described in the 2014 paper by Ross, Girshik, et al. From UC Berkeley, titled Rich Feature Hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. It may have been one of the first large and successful application of convolution neural network to the problem of objects localization, detection, and segmentation. This approach was demonstrated on benchmark dataset, achieving them state-of-the-art result on the VOC 2012 dataset and 200 class ILS VRC 2013 object detection dataset. Their proposed RCNN model is comprised of 3 modules. They are module 1, region proposal, generate and extract category independent region proposals, for example, candidate bounding boxes. Module 2 है कि region देखे proposal, generate and extract category independent region proposal, candidate bounding boxes निकालते हैं. Feature extract feature from each candidate region, for example, using a deep convolution neural network. Classifier, classify features as one of the known classes, for example, linear SVM classifier, यानी कि वैल्यू के बेस पे इस पे क्लासिफाई कर दे.
क्या हो सकता है ना, देखिए प्रिय बना, अगर मैं इसको वैल्यू के बेस पर क्लस्टर करूं तो हो सकता है कि यहां से लाइन खींच जाए। देखिए समझते हैं इसको, एक क्लस्टर ये बन जाए, एक क्लस्टर ये बन जाए, ठीक है, एक क्लस्टर ये, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, है ना। वैल्यू के बीच में अगर मैं क्लस्टरिंग कर दूं और इसको फिर मैं कहूं कि एक बाउंडिंग बॉक्स बना लूं, या मुझे नहीं क्लियर हो रहा टेढ़ा मेढ़ा, तो 2-4 बाउंडिंग बॉक्स, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा 2-4-5 बाउंडिंग बॉक्स बनाऊं, एक इधर के 2-4 बना लूं, इधर के, कुल मान लीजिए टोटल 10 बाउंडिंग बॉक्स बना लूं और सब में इमेज रिकॉग्निशन करूं तो निकाल लूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि वैल्यू के बीच में इसमें क्लस्टरिंग की गई होगी। अब इमेजेस में ये चीजें थोड़ी समझ में भी आती है ना। तो देखिए मॉड्यूल 1 रीजन प्रपोजल, एक रीजन में प्रपोज कर, जनरेट एंड एक्सट्रैक्ट कैटेगरी, जनरेट एंड एक्सट्रैक्ट कैटेगरी इंडिपेंडेंट रीजन प्रपोजल, जनरेट करो और एक्सट्रैक्ट करो कैटेगरी इंडिपेंडेंट रीजन प्रपोजल, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट बाउंडिंग बॉक्सेस। मॉड्यूल 2 है फीचर एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम ईच कैंडिडेट रीजन। extract features from each candidate region, for example using a deep convolution neural network, extract features from each candidate region, पहले डिसाइड करो कैंडिडेट रीजन, वही क्लस्टरिंग वगैरह। रीजन प्रपोजल, जनरेट एंड एक्सट्रैक्ट कैटेगरी इंडिपेंडेंट रीजन प्रपोजल फॉर कैंडिडेट बाउंडिंग, क्लासिफाई फीचर्स एज वन ऑफ द नोन क्लासेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो अनलेबल्ड क्लासिफाई करो, क्लस्टरिंग करो। The picture of the model is summarized in the image below taken from the paper। देखिए एक ये बाउंडिंग बॉक्स बना, एक ये घोड़े का बना, ये जितनी डिस्टिंक्ट चीजें दिख रही बना, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, एक इसका बाउंडिंग बॉक्स बना, ठीक है। अब एक एक बाउंडिंग्स को वार्प्ड रीजन, इनपुट इमेज एक्सट्रैक्ट रीजन प्रपोजल 2000 रीजन इसमें से ये बता रहे हैं, अब ये बहुत ज्यादा है। वार्प्ड रीजन, ये जो है एक रीजन ऐसा आ रहा है जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस रीजन के ऊपर अब मैं क्या करूंगा, अभी तक आप प्रियंवदा आपने जो इमेज रिकॉग्निशन पढ़ा है वो इसके ऊपर आप लगाएंगे, और डिसाइड करेंगे एरोप्लेन है कि पर्सन है कि टीवी है, क्लासिफाई द रीजन। तो ये पूरा प्रक्रिया हमारी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कहलाती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। A computer vision technique is used to propose candidate। अब कंप्यूटर विजन की टेक्निक का यूज करके कैंडिडेट बनाया जाए, कैंडिडेट मतलब ये बाउंडिंग बॉक्सेस, ठीक है। A region are bounding boxes of potential object in the image called selective search 1, selective search, इसको selective search बोला। Although the flexibility of the design allows other region proposals algorithm to be used, the feature extractor used by the model was the feature extractor used by the model was the AlexNet deep convolution neural network। जो फीचर एक्सट्रैक्टर है हम यूज कर रहे हैं, द फीचर एक्सट्रैक्टर यूज्ड बाय द मॉडल, जो मॉडल द्वारा यूज किया जा रहा है, was the AlexNet deep convolution neural network। ये है AlexNet deep convolution neural network। The feature extractor used by the model AlexNet deep convolution neural network, और ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसने जीता है ILS VRC 2012 इमेज क्लासिफिकेशन कॉम्पिटिशन, ठीक है। द आउटपुट ऑफ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वाज 4096 एलिमेंट वेक्टर। अब इसका जो आउटपुट है 4096 एलिमेंट वेक्टर है, दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द इमेज, जो डिस्क्राइब कर रहा है इमेज का कंटेंट, दैट इज फेड टू लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर क्लासिफिकेशन।
Specifically, one support vector machine is trained for each known class. हर एक क्लास के लिए ट्रेन किया गया है, यानी कि मैनुअली एनोटेट किया गया है दोस्तों। यानी कि एक बड़ी इमेज में इसको मैनुअली, पहले ये इन्होंने बाउंडिंग बॉक्स बनाया और सबको एनोटेट किया। अभी आपको लेवलिंग भी बताएंगे। The output of the CNN was a 4096 element vector. इसमें से 4096 element vector निकला that described the content of the image that is fed to linear SVM for classification. Specifically, one support vector machine is trained for each known class. It is a relatively simple and straightforward application of CNNs to the problem of object localization and recognition. A downside of the approach is that it is slow. अब देखिए इसका एक डाउनसाइड है इस अप्रोच का, is that it is slow, requiring a CNN based feature extraction, feature extraction pass on each of the candidate regions. जो रिक्वायर करता है CNN based feature extraction pass on each of the candidate regions generated by the region proposal algorithm, जो कि जनरेट किया गया है region proposal algorithm के द्वारा। CNN based feature extraction pass to CNN based feature extraction CNN based feature extraction pass on each of the candidate regions generated by the region proposal algorithm. अब देखिए क्या कर रहे हैं, the downside of the approach is that it is slow, requiring a CNN based feature extraction. CNN based इनको feature extraction pass चाहिए on each of the candidate region, प्रत्येक candidate region, on each of the candidate regions generated by the region proposal algorithm, जो कि region proposal algorithm द्वारा generate किया। This is a problem as the paper describes the model operating upon approximately 2000 proposed regions. अब इसमें 2000 proposed region निकाल रहे हैं per image at test time. Python, Caffe and MATLAB source code for RCNN as described in the paper was made available in the RCNN GitHub repository. RCNN की GitHub repository में जाएंगे तो आपको इस एल्गोरिथम का कोड मिल जाएगा, पाइथन और मैटलैब। तो ये एक एल्गोरिथम था, रीजन प्रपोजल एल्गोरिथम, जो 2000 दे रहा है। अब देखिए फास्ट RCNN है। Given the great success of RCNN, Girsek then at the Microsoft Research proposed an extension to address the speed issues of RCNN in a 2015 paper titled Fast RCNN. The paper opens with a review of the limitations of RCNN. अभी पेपर शुरू ही होता है कि RCNN की limitations. अभी limitation क्या है? Training is a multi-stage pipeline. Training is a multi-stage pipeline है, involves the preparation and operation of the 3 separate models. Training is expensive in space and time. Training a deep convolution neural network on so many region proposals per image is very slow. Object detection is slow. Make prediction using a deep convolution neural network on so many regions proposal is very slow. तो 2000 अगर आप रीजन प्रपोज करेंगे और हर 2000 रीजन में इमेज रिकॉग्निशन भी चलाना है डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, जो कि आपने देखा है कि लास्ट हम लोगों ने जो बनाया था प्लैनेट वाला वो 91 MB का था। अब उतना बड़ा मॉडल रन करेगा तो इट विल टेक टाइम, तो ये बहुत स्लो था RCNN. A prior work was proposed to speed up the technique called spatial pyramid pooling network. अब ये चीज हुई कि इसको तेज कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने बताया स्पेशियल पिरामिड पूलिंग नेटवर्क। Spatial pyramid pooling network for SPP nets. In the 2014 paper, Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolution Neural Network for Visual Recognition,
for visual recognition. A prior work was proposed to speed up the technique called spatial pyramid pooling network or SPP nets. In the 2014 paper, Spatial Pyramid Pooling, देखिए पहले इन्होंने प्रपोज किया कि स्पीड अप द टेक्निक कॉल्ड स्पेशियल पिरामिड pooling network SPP net in the 2014 paper. Spatial pyramid pooling in deep convolution network for visual recognition. This did speed up the extraction of features, but essentially used a type of forward pass caching algorithm, fast RCNN, forward pass caching algorithm. इसको फास्ट RCNN कहा गया. So fast RCNN is proposed as a single model instead of a pipeline to learn and output regions and classifications directly. The architecture of the model takes the photograph and a set of reason proposals as input that are passed through a deep convolutional neural network. A pre-trained CNN such as VGG16 is used for feature extraction. A pre-trained CNN such as VGG16 is used for feature extraction. The end of the deep convolution neural network is a custom layer. The end of the deep convolution neural network. अब इसमें क्या किया गया कि ए प्री ट्रेन्ड CNN सच एज VGG16 का उपयोग किया गया फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए. द एंड ऑफ डीप CNN इज ए कस्टम लेयर कॉल्ड ए रीजन ऑफ इंटरेस्ट. एक डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज ए कस्टम लेयर कॉल्ड ए रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर, ROI, region of interest ROI pooling layer, that extract features specific for a given input candidate region. वो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है एक दिए हुए इनपुट कैंडिडेट रीजन. The output of the CNN is then interpreted by a fully corrected layer, that is image recognition, then the model bifurcates into two outputs, one for the class prediction via softmax layer and another with a linear output for the bounding box. तो दो भाग में डिवाइड होता है द आउटपुट ऑफ द CNN. एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं. द आर्किटेक्चर, यहां से दोस्तों, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडल टेक्स द फोटोग्राफ एंड ए सेट ऑफ रीजन प्रपोजल्स. अपने से सेट करता है, बताता है, रीजन प्रपोजल करता है एज इनपुट के रूप में दैट आर पास थ्रू ए डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क. उसको हम लोग रीजन्स, एक कुछ इलाके हम लोग उसमें से रीजन खोज रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से. और एक pre-trained CNN convolution neural network such as VGG16 is used for feature extraction. और एक pre-trained convolution neural network VGG16 का हम यूज कर रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए. The end of the deep convolution neural network is a custom layer. जो एंड है डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का, वो एक कस्टम लेयर है जिसको हम लोग कर रहे हैं ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर. Region of interest pooling layer or ROI pooling that extracts feature specific for a given input candidate region. और वो क्या करता है, ROI region of interest, ROI region of interest pooling. और वो क्या करता है, ROI region of interest pooling that extracts, जो एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स, वो फीचर जो कि स्पेसिफिक है फॉर ए गिवन इनपुट कैंडिडेट रीजन, दिए हुए इनपुट कैंडिडेट रीजन का. यानी पहले कैंडिडेट डिसाइड करता है, उसमें VGG16 के फीचर एक्सट्रैक्टर यूज करता है, उस फीचर एक्सट्रैक्ट को यूज करके जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की एंड लेयर है जिसको कि हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर कर रहे हैं, और ROI दैट एक्सट्रैक्ट फीचर स्पेसिफिक, और वो एक्सट्रैक्ट करता है फीचर स्पेसिफिक फॉर ए गिवन इनपुट कैंडिडेट रीजन, दिए हुए कैंडिडेट रीजन के. द आउटपुट ऑफ द CNN इज देन इंटरप्रेटेड, और जो CNN है, द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो आउटपुट है इज देन इंटरप्रेटेड बाय ए फुल्ली करेक्टेड लेयर. और हम लोग इसका इंटरप्रेट करते हैं फुल्ली करेक्टेड लेयर. देन द मॉडल बाइफरकेट्स इनटू टू पार्ट्स.
output. One for the class prediction कि भाई घोड़ा है, एरोप्लेन है, क्या है, why softmax ले, and another with a linear output for bounding box. और दूसरा जो है हम यूज करते हैं with a linear output and another with a linear output, एक linear output के द्वारा bounding box and another with a linear output for bounding box. जैसे कि हम bounding box, सही bounding box जो पहले हमने प्रपोज किया था उसकी तुलना में अब जो सही इस जिसमें से एक फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो सही बाउंडिंग बॉक्स डिसाइड कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज देन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, बार बार करते हैं फॉर ईच रीजन ऑफ द इंटरेस्ट इन गिवन इमेज. हर एक इमेज में, इमेज के अंदर एक क्षेत्र में, यानी proposed region of interest ROI में the architecture of the model is summarized in the image below taken from the paper. तो इमेज में दिया गया जो कि पेपर से लिया गया है. ये देखिए क्या कर रहा है. अच्छा, इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या. द मॉडल इज सिग्निफिकेंटली फास्टर, ये मॉडल फास्ट है, टू ट्रेन एंड टू मेक प्रेडिक्शंस, येट स्टिल रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैंडिडेट रीजंस. लेकिन अभी भी इसमें समस्या क्या है कि हमें सेट ऑफ कैंडिडेट रीजन प्रपोज करना पड़ता है. हर एक इनपुट इमेज के साथ अपने से हमको करना पड़ेगा कि ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये बाउंडिंग बॉक्स है. सेट ऑफ प्रपोज्ड रीजन अपने से अभी नहीं पहचान पा रहा है. Python and C++, that is CAFE, source code for first RCNN as described in the paper was made available in the GitHub repository. अब आते हैं दोस्तों faster RCNN पे. The model architecture was further improved for both speed of training and detection by Shawking, Ren et al. At Microsoft Research. In the 2016 paper titled Faster RCNN Towards Real-Time Object Detection with the Reason Proposal Network, this architecture was the basis for the first place results achieved on both the ILS VRC 2015, MS COCO, ये data set के नाम है MS COCO 2000, ILS and MS COCO 2015, Object Recognition Detection Competition Task. अच्छा, MS COCO is also a competition task and ILS VRC तो हम लोग काफी कर रहे हैं. The architecture was designed to both propose and refine reason proposals. The architecture was designed जो आर्किटेक्चर का हमने डिजाइन किया, the architecture was designed to both propose and refine reason proposals. The architecture was designed to both propose and refine reason proposals. The architecture was designed to both propose. The architecture was designed to both propose and refine the reason proposals as part of the training process. As part of the training process, referred to as reason proposal network. Referred to as reason proposal network. The architecture was designed to both propose and refine reason proposals as part of the training process, referred to as reason proposal network (RPN). These reasons are then used in concert with a fast RCNN model in a single model design. These improvements both reduce the number of reason proposals and accelerate the test time operation operations of the model to near real time with then state-of-the-art performance. Our detection system has a frame rate of 5. हमारा डिटेक्शन सिस्टम का फ्रेम रेट है 5 FPS. 5 फ्रेम FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड. Our detection system has a frame rate of 5 FPS, that is 5 frames per second, including all steps. On a GPU, while achieving state-of-the-art object detection accuracy on Pascal VOC 7/2012 MS COCO data or MS COCO data set with only 300 proposals per image. In ILS VRC and MS COCO 2015 competitions, faster RCNN and RPN are the foundations of the first place, winning entries in several tracks. Although it is a single unified model, the architecture is comprised of two modules.
Although it is a single unified model, the architecture is comprised of two modules. Module 1, रीजन प्रपोजल नेटवर्क। एक सेकंड आ दोस्तों, एक सेकंड बस। ठीक है। रीजन प्रपोजल नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, although it is simple unified model, the architecture is comprised of two modules. R faster RCNN में the model is composed of two modules. Module 1, रीजन प्रपोजल नेटवर्क। भाई रीजन को प्रपोज करने का एक नेटवर्क होगा, यानी कहां पे रीजन बनाना है, यही महत्वपूर्ण है। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क फॉर प्रपोजिंग रीजन एंड द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंसीडर इन द रीजन। मॉड्यूल 2, फास्ट RCNN, convolution neural network for extracting feature from the proposed region and outputting the bounding box and class level। देखिए पहला क्या है कि रीजन प्रपोजल नेटवर्क RPN, दूसरा क्या है फास्ट RCNN। रीजन प्रपोजल नेटवर्क क्या करेगा, प्रपोज करेगा रीजन फॉर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंसीडर इन द रीजन। रीजन प्रपोज करेगा और उसके बाद आप क्या करना है, फास्ट RCNN से उस रीजन को लेना है, उस रीजन से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर उसमें से इमेज रिकॉग्निशन करना है और उसके लिए प्रॉपर बाउंडिंग बॉक्स बना के देना है ना, प्रॉपर बाउंडिंग बॉक्स। रीजन एंड आउटपुटिंग द बाउंडिंग बॉक्स एंड क्लास लेवल। क्लास लेवल मतलब प्रिडिक्ट करना है क्या इमेज रिकॉग्निशन। बोथ मॉड्यूल ऑपरेट ऑन द सेम आउटपुट ऑफ ए डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब दोनों मॉड्यूल जो है सेम आउटपुट ऑफ ए डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे काम करेंगे। द रीजन प्रपोजल नेटवर्क एक्ट एज एन अटेंशन मैकेनिज्म। अब देखिए फिर से अटेंशन वाली बात आ गई जो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते थे। द रीजन प्रपोजल नेटवर्क, the reason proposal network act as an attention mechanism for the fast RCNN network, informing the second network of where to look or pay attention। informing the second network को inform करते हैं of where to look or pay attention, of where to look, हमें कहाँ ध्यान देना है और pay attention। The architecture of the model is summarized in the image below। RPN जो है अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, रीजन प्रपोजल नेटवर्क कि कहां पे हमें ध्यान देना है और हम वहां पर रीजन प्रपोज करेंगे जो कि जिस फर्दर इमेज रिकॉग्निशन और उसके ऊपर एक प्रॉपर बाउंडिंग बॉक्स बनेगी। ये दोनों चीजें मिली दोस्तों तो बना हमारा फास्टर RCNN। तो इंट्रोडक्शन देखिए 02, ये देखिए बाउंडिंग बॉक्स रिकॉग्निशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, बाउंडिंग बॉक्स रीजन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, बाउंडिंग बॉक्स रीजन प्रपोजल, ये 3 रीजन प्रपोज किए गए हैं। अब इस रीजन में क्या कर रहे हैं, लीनियर प्लस सॉफ्टमैक्स लीनियर FC फास्ट RCNN लगाया गया। तो क्या हुआ, RPN प्लस फास्ट RCNN ये दोनों मिलके दोस्तों बनते हैं फास्टर RCNN। फास्टर RCNN क्लासिफायर एंड बॉक्स रीजन, प्रपोज्ड रीजन, फीचर मैप RPN एंड सो। अब ये कुछ दिया है कि टेस्ट टाइमिंग पर इमेज RCNN में 50 सेकंड है, फास्टर RCNN में 2 सेकंड है और फास्ट RCNN में 2 सेकंड है और फास्टर RCNN में 0.2 सेकंड।
speed 1x 25 है 250 times per और एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बराबर। चलिए, द RPN region proposal network works by taking the output of a pre-trained deep convolution neural network. The RPN works by taking the output of a pre-trained deep convolution neural network. The region proposal network works by taking the output of a pre-trained deep convolution neural network, such as BGG16, and passing a small network over the feature map and outputting multiple region proposals and a class prediction for each region. अब देखिए, RPN works by taking the output of a pre-trained deep convolution. pre-trained एक मॉडल यूज कर रहा है जैसे कि VGG16 and passing a small network over the feature map. फीचर मैप के ऊपर एक स्मॉल नेटवर्क लगा रहे हैं एंड आउटपुटिंग मल्टीपल रीजन प्रपोजल्स, और हम आउटपुट दे रहे हैं मल्टीपल रीजन प्रपोजल्स एंड ए क्लास प्रिडिक्शन, और एक क्लास प्रिडिक्शन, मल्टीपल रीजन प्रपोजल्स एंड ए क्लास प्रिडिक्शन फॉर ईच. Now region proposals are bounding boxes based on so-called anchor boxes or predefined shapes designed to accelerate and improve the proposals of regions. The class prediction is binary. Class का prediction binary है, indicating the presence of an object or not. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक मजेदार चीज, यहाँ पे अभी इमेज रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, जो मैंने पहले कहा था वो गलत है. यहां पे ये हो रहा है कि ये रीजन ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी 1 ऑब्जेक्ट नहीं है, फालतू चीज है. 0 ये हुआ क्लास लेवल. अभी ये चीजों को मैं अभी बताऊंगा और डिटेल में दोस्तों, जब मैं आपको पाइथन के एक पैकेज से इमेज की खुद लेबलिंग करना सिखाऊंगा, डेटा की लेबलिंग कैसे की जाती है. ठीक है. The class prediction is binary, indicating the presence of an object or not, so-called objectness of the proposed region. A proceeding of attempting training is used when the both subnetworks are trained at the same time. ठीक है. तो region proposals are bounding boxes based on so-called anchor boxes or predefined shapes designed to accelerate and improve the proposals of regions. The class prediction is binary, indicating the presence of an object. The class prediction is binary, indicating the presence of an object or not, so-called objectness of the proposed region. The class prediction is binary, indicating the presence of an object or not, so-called objectness of the proposed region. अब देखिए, a procedure of alternating training is used. एक और ट्रेनिंग का यूज किया जाता है where both subnetworks are trained at the same time, although interleaved. This allows the parameters in the feature detector deep convolution neural network to be tailored or fine-tuned for both tasks at the same time. तो हम लोग अल्टरनेटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क टू अलाउ कर सके पैरामीटर्स इन द फीचर डिटेक्टर, जो फीचर डिटेक्ट कर रहा है जो विजिबल अटेंशन मैकेनिज्म से डीप allow the parameter in the feature detector deep convolution neural network to be tailored or fine-tuned for both tasks at the same time. At the same time, this faster RCNN architecture is the pinnacle of the RCNN family of models and continues to achieve a near state of the art results on object recognition tasks. A further extension adds support for image segmentation described in the paper 2017 paper Mask RCNN
एक फर्दर एक्सटेंशन ऐड हो रहा फॉर इमेज सेगमेंटेशन का ही 2017, जिसको हम लोग मास्क RCNN बोलते हैं. In Python and Cafe, source code of fast RCNN described in the paper was made available in GitHub repository. चलिए, YOLO model family. Another popular family of object recognition models is referred to collectively as YOLO. अब दूसरी फैमिली पे आ जाते हैं RCNN के बाद. YOLO, are you only loop once, developed by Joseph Redman et al, यानी उनकी टीम के द्वारा. Joseph Redman, the RCNN models may be generally more accurate, yet जो RCNN मॉडल है जान तौर से बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं. Yet the YOLO family of models are fast. यानी RCNN ज्यादा एक्यूरेट है दोस्तों, लेकिन YOLO फैमिली का मॉडल बहुत फास्ट है, मच फास्टर देन RCNN, achieving object detection in real time. YOLO. The YOLO model was first described by Joseph Redman et al. In 2015 paper titled "You Only Look Once: Unified Real-Time Object Detection." Note that Ross Girshick, developer of RCNN, was also an author and contributor to this work. Then at Facebook AI Research, the approach involves a single neural network trained end-to-end that takes a photograph as input. The approach involves a single neural network. The approach involves a single neural network trained end-to-end that takes a photograph as input and predicts bounding boxes. YOLO में क्या होता है दोस्तों? एवरेज निकाल, सिंगल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन्ड एंड टू एंड दैट टेक्स ए फोटोग्राफ एज इनपुट, प्रेडिक्ट बाउंडिंग बॉक्सेस. पहले बाउंडिंग बॉक्स को प्रेडिक्ट करता है एंड क्लास लेवल फॉर ईच बाउंडिंग बॉक्सेस डायरेक्टली, और डायरेक्टली क्लास दे देता है बाउंडिंग बॉक्सेस को डायरेक्टली. अब दोस्तों क्लास का मतलब क्या हुआ? क्लास का मतलब वही है 0 1. 1 मतलब कि इसमें कुछ है, काम के लायक चीज है, तो दूसरा कि इसमें काम के लायक चीज नहीं है. अभी इमेज रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है. देखिए RCNN या YOLO में इमेज रिकॉग्निशन का हम अलग से कोड लिखेंगे. यानी पहला काम तो ये है ना कि एक अच्छा भली भांति सही बाउंडिंग बॉक्स बने, है ना, रीजन निकालो. तो रीजन सही निकला है कि नहीं निकला, उसके क्लास लेवलिंग की बात चल रही है. The approach involves a single loop that takes a photograph as input and predict bounding boxes and class level for each bounding box directly. The technique offers lower predictive accuracy. इसमें थोड़ी सी lower predictive accuracy है. More localization error है, although operates at 45 frame per second. अब ये जो है 45 frame per second काम करता है, and up to 155 frame per second for a speed optimized version of the model. अब बहुत तेज चाहिए तो इतना तेज कर देता है, तो इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना पड़ता है. Our unified architecture is extremely fast. Our base YOLO model processes images in real time at 45 frame per second. A base model जो है YOLO का 45 frame per second करता है. A smaller version of the network, fast YOLO, एक smaller version है इस network का, fast YOLO, processes an astounding 155 frame per second. ठीक है. The model works by first splitting the input image into a grid of cells. The model कैसे काम करता है? पहले तोड़ता है input image को into a grid of cells where each cell is responsible for predicting a the model works by first splitting the input into a grid of cells. यानी कि आपकी इमेज की जितनी भी सेल्स है, देखिए इसमें 128 by 128, तो पूरे इमेज को तोड़ देगा हर एक सेल में, एक एक सेल. यानी 128 इधर, 128 है, पूरी 128 128 मल्टीप्लाइड बाय 128 जितनी भी सेल्स हैं उतने में तोड़ दिया. वेयर ईच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेडिक्टिंग ए बाउंडिंग बॉक्स. अब हम ये कह रहे हैं कि हर एक सेल अपने आप में एक बाउंडिंग बॉक्स है. इफ द सेंटर ऑफ ए बाउंडिंग बॉक्स फॉल्स विद इन इट, अगर सेंटर जो है बाउंडिंग बॉक्स का फॉल विद इन इट,
अच्छा, the works model by first displaying the input image into a grid of cells where each cell is responsible for predicting a, अच्छा हर एक सेल से हम बॉन्डिंग बॉक्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना? If the center of a bounding box fall within it, यानी कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए एक सेल लिया, इस सेल से हम देख रहे हैं सिमिलर कितने हैं, तो देखिए ये कम करते करते स्क्रैच करते 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 ये देखिए बॉन्डिंग बॉक्स बनाए, एक बॉन्डिंग बॉक्स, यानी मर्ज करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं एक एक सेल। कुछ ऐसी प्रक्रिया है। इफ द सेंटर ऑफ ए बाउंडिंग बॉक्स फॉल विद इट, अगर एक बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर इस ग्रिड के सेल उसके अंदर फॉल कर रहा है तो वो बाउंडिंग बॉक्स का हिस्सा है। ईच ग्रिड सेल प्रेडिक्ट ए बाउंडिंग बॉक्स इन्वॉल्विंग द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। हर एक सेल अपने बाउंडिंग बॉक्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है, एक्स और वाई एक्सिस की अपनी एग्जैक्ट लोकेशन एंड द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कॉन्फिडेंस। A class prediction is also based on each cell. For example, a image may be divided into 7 by 7 grid for each cell. तो एक इमेज है, इसको 7 by 7, 128 by 128, तो 7 by 7 ग्रिड बना लेते हैं, divided into 7 by 7 grid, and each cell in the grid may predict 2 bounding boxes. और एक 7 by 7 के एक सेल में, एक जो सेल है 7 by 7 की ग्रिड में, वो 2 बॉन्डिंग बॉक्स प्रेडिक्ट कर सकता है, रिजल्टिंग इन 98 प्रपोज्ड बॉन्डिंग बॉक्सेस। तो 7 7 जा 49, 49 सेल हुआ, हर 2 कर सकता है, तो 49 into 2 98, 98 प्रपोज्ड बॉन्डिंग बॉक्स, यानी एक ग्रिड से 98 बॉन्डिंग बॉक्स प्रेडिक्ट हो रहे हैं दोस्तों, एक ग्रिड से 98 बॉन्डिंग बॉक्स। द क्लास प्रोबेबिलिटीज the class probabilities map and the bounding boxes with the confidence are then combined into a final set of the class probabilities map। हम class probability को map करते हैं, and the bounding boxes with confidence, जिसका bounding box का confidence value xy coordinate के सबसे ज्यादा है, are then combined into final set of bounding boxes। और इनको हम combine करते जाते हैं, और combine करते करते हमने final set of bounding boxes बनाते हैं, and class labels, उनका class label उठाते हैं। The image taken from the paper below summarizes the 2 outputs of the model। 2 आउटपुट समराइज कर रहा है। ये इमेज है, इसकी ग्रिड्स बना रहे हैं, उससे 2 बॉन्डिंग बॉक्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन 1 by 1 अप स्केलिंग, कन्वोल्यूशन सेट है, व्हाइट वाला कन्वोल्यूशन सेट है, येलो वाला अप स्केलिंग है, ग्रीन वाला कन्वोल्यूशन 1 1 है, और ऑरेंज वाला रेसिडुअल है, एरर है। और ये देखिए प्रेडिक्ट 1, प्रेडिक्ट 2, प्रेडिक्ट 3, ये बॉन्डिंग बॉक्सेस है, कन्वोल्यूशन सेट 1 by 1, ये कन्वोल्यूशन सेट है, जो भी है। चलिए योलो वर्जन 2, इसको योलो 9000 एंड योलो वर्जन 3, आइए इसको डिस्कस करते हैं। The model was updated by Joseph Redmond and Ali Farhadi in an effort to further improve model performance in their 2016 paper titled YOLO 9000. Better, faster, stronger. Although this variation of the model is referred to as YOLO version 2, an instance of the model is described that was trained on 2 object recognition data sets. इसको हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन डेटा सेट पे चलाया, पैरेलली कैपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग 9000 ऑब्जेक्ट क्लासेस। Hence given the name YOLO 9000, 9000 ऑब्जेक्ट क्लासेस को प्रेडिक्ट कर सकता था, इसलिए इसका नाम YOLO 9000। A number of training and architectural changes were made to the model। थोड़ा आर्किटेक्चरल और ट्रेनिंग चेंजेस किया तुम्हारे, such as the use of batch normalization and high resolution input images। Like faster RCNN, YOLO version 2 model makes use of anchor boxes, predefined bonding boxes with useful shapes and sizes that are tailored during training। The choice of bonding boxes for the image is pre-processed using k-mean analysis। अब जो चॉइस है बॉन्डिंग बॉक्सेस का फॉर द इमेज इज प्री-प्रोसेस्ड यूजिंग k-mean क्लस्टरिंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। क्लस्टरिंग कर दिया, इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही अलग अलग क्लस्टर बनेंगे,
Importantly, the predicted representation of the bounding boxes, बात थोड़ी है कि जो प्रिडिक्ट हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाउंडिंग बॉक्सेस इज चेंज्ड. द प्रिडिक्टेड रिप्रेजेंटेशन, जो प्रिडिक्ट किया हुआ रिप्रेजेंटेशन है, द प्रिडिक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाउंडिंग बॉक्सेस इज चेंज्ड टू अलाउ द प्रिडिक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, जो प्रिडिक्ट किया हुआ रिप्रेजेंटेशन है बाउंडिंग बॉक्सेस चेंज टू अलाउ स्मॉल चेंजेस to have a less dramatic effect on the predictions, resulting in a more stable model. Rather than predicting position and size directly, offsets are predicted for moving and reshaping the predefined anchor boxes related to a grid cell and dampened by a logistic function. Okay, further improvement to the model were proposed by Joseph Redman and Ali, their 2018 paper titled YOLO version 3, an incremental improvement. The improvements were reasonably minor, including a deeper feature detector network and minor representational changes. तो minor changes थे. How to perform object detection with YOLO version 3. आइए कैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विद YOLO वर्जन 3 देखते हैं. देखिए, object detection is a task in computer vision that involves identifying the presence, location, and type of one or more objects in a given photograph. It is a challenging problem that involves building upon methods for object recognition. For example, where are they? Object localization, example, what are their extent? And object classification, for example, what are they? In recent years, deep learning techniques are achieving state-of-the-art results for object detection, such as on standard benchmark dataset and in computer vision competitions. Notable is the You-Only-Look ones are the YOLO family of convolution neural networks that achieve near state-of-the-art results with a single end-to-end model that can perform object detection in real time. That can perform object detection in real time. In this tutorial, you will discover how to develop a YOLO version 3 model for object detection on new photograph. इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कवर करेंगे कि हाउ टू डेवलप ए YOLO वर्जन 3 मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑन न्यू फोटोग्राफ. After completing this tutorial, you will know YOLO-based convolution neural network family of model for object detection and the most recent variation called YOLO version 3, the best of breed open source library implementation of the YOLO version 3 for the Keras deep learning library, how to use a pre-trained YOLO version 3 to perform object localization and detection on new phone. तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों. अभी 12:43 हो रहा, तो वी विल मीट एट 1. ओके,
Okay, guys. So let's start. Priyamvada, are you there? Chalo, YOLO for object detection. Okay, YOLO object detection is a computer vision task. Object detection is a computer vision task that involves both localizing one or more object within an image and classifying each object in the image. It is a challenging computer vision task that requires both successful object localization in order to locate successful object localization in order to locate successful object localization object sorry successful in order to locate and draw a bounding box around each object in an image and object classification to predict the correct class of object that was localized. The You Only Look Once or YOLO family of models are a series of end-to-end deep learning models designed for fast object detection. Developed by Joseph Redmond et al. And first described in the 2015 paper titled You Only Look Once. Unified real-time object detection. The approach involves a single deep convolution neural network, originally a version of, देखिए, the approach जो involve करती है single deep convolution neural network, originally a version of Google LeanIt, Google LeanIt है जो मैंने बताया था आप लोग को आर्किटेक्चर, later updated and called DarkNet. अब ये Google LeanIt ही बाद में अपडेट होकर DarkNet. आजकल बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्किटेक्चर है, ResNet है, VGG16, Google LeanIt, Inception, उसी में DarkNet है. तो ये Google LeanIt ही फर्दर आगे चल के DarkNet बन जाता है. ठीक है, later updated and called DarkNet based on VGG that splits the input into a grid of cells 7x7 जैसा पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, and each cell directly predicts a bounding box and object classification. The result is a large number of candidate bounding boxes. The result is a large number of candidate bounding boxes that are consolidated into a final prediction by a post-processing step. There are three main variations of the approach. At the time of writing, they are YOLO 1, YOLO 2, and YOLO 3. The first version proposed the general architecture, whereas the second version refined the design and made use of predefined anchor boxes to improve bounding box proposal, and version 3 further refined the model architecture and training process. Although the accuracy of the model is close, but not as good as reason-based convolution neural networks. They are popular for object detection because of their detection speed, often demonstrated in real time on video or with camera feed input. A single neural network predicts bounding boxes and class probabilities directly from full images in one evaluation. Since the whole detection pipeline is a single network, it can be optimized end-to-end directly on detection performance. In this tutorial, we will focus on using YOLO version 3. Experience Core. अब आते हैं Experience Core. YOLO version 3 for Keras object. Source code for each version of YOLO is available, as well as pre-trained models. The official DarkNet GitHub repository contains the source code for the YOLO versions mentioned in the papers written in C. The repository provides a step-by-step tutorial on how to use the code for object detection. It is a challenging model to implement from scratch, right? Especially for beginners, as it requires the development of many customized
model elements for training and for prediction. For example, even using a pre-trained model directly requires sophisticated code to distill and interpret the predicted bounding boxes output by the model. Instead of developing this code from scratch, we can use a third-party implementation. There are many third-party implementations designed for using YOLO with Keras, and none appear to be standardized and designed to be used as a library. अच्छा, none appear to be, देखिए ये तरीके तो हैं, third party implementation designed for using YOLO with Keras, and none appear to be standardized and designed to be used as a library. अभी YOLO को हम एक डायरेक्ट लाइब्रेरी की तरह, जैसे लाइब्रेरी में फंक्शन होते हैं, तो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, अभी नहीं बन पाया. The YAD2K project, the YAD2K project was a de facto standard for YOLO version 2 and provided scripts to convert the pre-trained weights into Keras format. Use the pre-trained model to make predictions and provided the code required to distill and interpret the predicted bounding boxes. Many other third-party developers have used this code as a starting point and updated it to support YOLO version 3. Perhaps the most widely used project for using pre-trained YOLO model is called Keras YOLO 3. Training and detecting object with YOLO 3 by Huynh, Nock and Har are Experian Car. अब देखिए ये नाम है Training and Detecting Object with YOLO version 3 by Huynh Gok An. Huynh Gok An, इनको हम लोग Experian Car भी कहते हैं. The code in the project has been made available under the permission MIT open source license like YAD2K. It provides a script of both load and use pre-trained YOLO model as well as transfer learning for developing YOLO version 3 model on new dataset. He also has a Keras YOLO 2 projects that provides similar code for YOLO version 2 as well as detailed tutorial on how to use the code in the repository. The Keras YOLO 3 project appeared to be an updated version of the project. Interestingly, Experian Core has used the model as the basis for some experiments and trained version of YOLO version 3 on a standard object detection problem such as kangaroo dataset, raccoon dataset, red blood cell detection, and others. He has listed model performance, provided the model weights for download, and provided YouTube videos of model behavior. For example, raccoon detection using YOLO version 3. अब देखिए raccoon detection, ये आते हैं वीडियो है, आते हैं इस वीडियो को देखते हैं. ये देखिए, ये इस तरीके से YOLO काम करता है and detecting the raccoon. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक वीडियो है. We will use Experian Core Keras YOLO 3 project. हम लोग Experian Core का Keras YOLO 3 project यूज करेंगे as the basis for performing object detection with the YOLO version 3 model. Object detection with YOLO version 3. प्रियमोदा, आप एक काम करेंगी? हेलो, maybe उनका ऑडियो नहीं चल रहा है. The Keras YOLO 3 project provided a lot of capability for using YOLO version 3 model, including object detection. The Keras YOLO 3 project provided a lot of capability for using YOLO version 3 model, including object detection, transfer learning, and training new models from scratch. In this section, we will use a pre-trained model to perform object detection on an unseen photograph. This capability is available in single Python file in the repository called YOLO 3. In the repository called YOLO 3, one file to detect them all.py that has 435 lines. This script is in fact a program that will use pre-trained weights to prepare a model and use that model to perform object detection
and output a model. It also depends upon OpenCV. Instead of using this program directly, we will reuse elements from this program. We will reuse elements from this program and develop our own scripts to first prepare and save a Keras YOLO version 3 model and then load the model to make a prediction for a new photograph. तो आइए देख करते हैं create and save model. The first step is to download the pre-trained model weights. These were trained using the darknet code base on MS COCO dataset. That was trained on MS COCO dataset darknet code base. Download the model weights and place them into your current working directory with the file name YOLO version 3.weights. Now guys, it is a large file that is 237 megabytes and may take a moment to download depending on the speed of your internet connection. YOLO version 3 pre-trained model weights, YOLO version 3.weight, 237 MB. Next, we need to define a Keras model. So let's take a look that we have the YOLO version 3 weights are there. 3 years ago, 245 MB. So guys, it is already provided in your files. So no need to download at all. But for practice, you can do that. Next, we need to define a Keras model that has the right number and type of layers to match the downloaded model weights. That means architecture. Let's take a look up here. 4 is 224 MB. Okay. So the model weights, the right number of layers and the architecture to match the downloaded model weights. The model architecture is called darknet. So dear friend, the model architecture is called darknet and was originally loosely based on VGG16 model. The YOLO 3, one file to detect them all.py script provides the YOLO 3, one file to detect them all.py script provides the make YOLO 3 model function to create the model for us. So there is one Python file all.py script provides the make of YOLO version 3 model. Make of YOLO version 3 model function YOLO version 3 model function to create the model for us, and the helper function there is two function to create the model for us, and there is another function, helper function conv_block, that is used to create, that is conv_block. There is two function. R.py script provide the make YOLO version 3 model function to create the model for us, and the helper function conv_block that is used to create blocks of layers. These two functions can be copied directly from the script. We can now define the Keras model for YOLO version 3. So just call from the Keras model make_YOLO version 3 model, call this and name it model. We need to load the model weights. The model weights are stored in whatever format that was used by darknet. Rather than trying to decode the file manually, we can use the weight reader class provided in the script. To use the weight reader, it is instantiated with the path to our weight file. Darknet. So whatever format that was used by darknet, rather than trying to decode the file manually, we can use the weight reader class provided in the script. To use the weight reader, it is instantiated with the path to our weights file. For example, YOLO version 3.weights. This will pass the file. See, we need to load the model weights. The model weights are stored in whatever format that was used by darknet. Rather than trying to decode the file manually, we can use the weight reader. We can use the weight reader class provided in the script.
To use the weight reader, it is instantiated. To use the weight reader, it is instantiated with the path to our weight. To use the weight reader, it is instantiated with the path to our weight for the YOLO version 3 weight. This will pass the file and load the model weights into memory in a format that we can set into our Keras model. So here I call the make YOLO version 3 model as a model, and here weight reader YOLO version 3.weights weight reader, then call the load weights function of the weight reader instance, passing in our defined Keras model to set the weights into the layer. So here weight underscore reader, this is the weight underscore reader, the loads are taken, dot load underscore weight, and here I pass the model. So the architecture and the weights, architecture guys and the weights, both are combined together to make a model. Then we call the load underscore weight function of the weight reader instance, passing in our defined Keras model to set the weights into the layer. Weight underscore reader load underscore weight model. That's it. We now have a YOLO version 3 model for use. Right? We can save this model to a Keras compatible .h5 model file ready for later use. Now save it, model.save model.h5. Now the YOLO version 3 model is saved. I taken the weight, I taken the architecture, combined it together, load it, and now save it for a Keras compatible model.h5 format. We can tie all this together. The complete code example introducing functions copied directly from YOLO 3, one file to detect them. The complete code example, including functions copied directly from YOLO 3, one file to detect them, all.py script is below. So here is the all.py script is below. Create a YOLO version 3 Keras model and save it to file based on https://github.com experience core Keras YOLO version YOLO 3, import struct numpy as np, con 2d, input batch parameter, leaky relu, zero padding 2d, upsampling 2d, add, concatenate, models, def convert block, make YOLO v3 model, class weight reader, load weights, and that is called. So dear friend, here you see all the weights are load and model underscore YOLO 3.h5 is saved. Let's take a look that we have that or not. That is model MNOP, mask RCNN, planet, and D model MNO, model, no, mask RCNN coco.h5 is there. But model H5 is not looking. Actually, refresh data sets, mask of CNN, data or mask of CNN. So let's take a look. Now run it. Model underscore YOLO 3.h5. Run it, dear friends. No module name keras.layer.merge. So let's check. So this is not in line 11. So concatenate. So it is like control with keras.layer. So there is no function like merge. That is what I'm thinking. So I am putting it hash. Now run it. It is running. It will take a while. Everything is load is waited, and we have to check that. TensorFlow compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. Model or component will be empty until you train or evaluate the model. Okay, that's fine. So let's check model dot PMNO. See, make YOLO version 3 seconds ago 249 LD
model underscore YOLO version 3 is created. Now my model YOLO model is created, dear friends, right? Let's check what is help instruct. Name the function to convert between Python values and C instructs. C instructs. Fine. Help one model to just. हेलो यस यस यस, मैं बस ये देखिए आपका YOLO वर्जन 3 मॉडल हम लोगों ने कर लिया है, तैयार कर लिया है। स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्ट क्या है? देखिए पाइथन की बहुत सारी वैल्यूज है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, तो स्ट्रक्ट फंक्शन का यूज करके हम उसे सी प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट की चीजों को पाइथन का कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें, चलिए आगे चलते हैं। रनिंग द एग्जाम। एक मिनट, मैं बोल रही थी ना कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो अभी हम कल करें। या डेफिनेटली, तो हम लोग रनिंग द एग्जाम्पल से ये उसका रिजल्ट है, यहां से हम लोग अब कल करेंगे एट द एंड ऑफ द रन। ठीक है, मेक द प्रेडिक्शंस। चलिए वैसे ओके। खत्म ही हो गया ये। हाँ हाँ, वो तो मैंने इसलिए कहा कि बहुत दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, बट इट्स ओके, काफी है। प्रैक्टिस कीजिए, पूरा रटना है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए सब समझ नहीं आता है, आपको बस रट डालना है। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, I'm stopping the share and ending. So I'm ending the meeting. Okay. Tomorrow we will meet at 10 and we will finish by 1 and we will do very research level of thing on YOLO. Right. So end meeting for all. Okay. Bye.